बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना मेरी साइड से कुछ? ऑल गुड? नहीं, यस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आई थिंक वी आर लाइव। ओके। सो या स्टार्ट करते हैं पहले छोटा मोटा इंट्रोडक्शन से, ठीक है? जस्ट ब्रीफ अस अबाउट यू। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, एंड एवरीथिंग अराउंड दैट, क्या पढ़ाई है, बैकग्राउंड वगैरह। ठीक है, देन विल कंटिन्यू विद टॉपिक्स। ओके। ओके, ठीक है। सो मेरा अंडरग्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, और जब मैं इंडिया में था देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग दैट टाइम। So that is when I was ओके। introduced to this history, religious studies, logic, philosophy, everything. और अभी I'm living इंटरेस्टिंग। in California and I'm a third year PhD student in mechanical and aerospace engineering. So ओह अभी नाइस। मेरी क्वालिफाइंग एग्जाम वगैरह है, तो इसलिए I'm not able to make more videos. बट अभी फिर से चालू करूंगा। और मेरा रिसर्च इज लाइक कंप्लीटली टेक्निकल, इट्स ऑल स्टेम। इट्स बेस्ड ऑन ड्रॉपलेट कंबशन एंड evaporation और propulsion वगैरह। But then I have taught in the Department of Religious Studies and Philosophy, and I actually was the TA for symbolic logic, and TA is teaching assistant. And then गॉट इट also I गॉट इट। was TA in, and also I was TA in many courses for religious studies, जैसे कि sacrifice या फिर survey of religions, Buddhism पे था, and then religious ethics and healthcare, ऐसा भी एक course था. So I also अच्छा अच्छा। was a teaching assistant. Yeah. So that's a short intro. नाइस नाइस। तो लाइक कैसा होता है, जैसे आपका एक साइंस फील्ड है, देन लाइक उसमें माइनर में आपने फिलोसफी ले रखा है, इट्स लाइक दैट? लाइक मतलब जो इधर आपका। yeah. So as a PhD student, grad student, you cannot have a minor as such. You can have another अच्छा major. अच्छा। But मेरा philosophy ओके another ओके। major नहीं, मेरा जो दूसरा major है that is actually energy engineering. So हम्म। basically 2027 तक I'll get masters in mechanical and aerospace, PhD in mechanical and aerospace, and masters in energy engineering. So ऐसे 3 डिग्रीज मिल नाइस जाएंगे। नाइस नाइस। या सो लाइक फिलोसफी में ऐसा ही आपको करता इंट्रो। है। अच्छा, वही वही मैं वही जानना चाहता कि इंट्रोडक्शन कैसे हुआ फिलोसफी से, बिकॉज यू आर टोटली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, देन या हाउ लाइक दिस टर्न्स आउट टू फिलोसफी? या सो as I said, in India I was preparing for UPSC, तो तब मुझे थोड़ा लॉजिक का या फिर हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड हम्म रीडिंग स्टफ लाइक एकेडमिक टेक्स्ट्स ऑन माय ओन। और फिर मैं हम्म। इधर यूएस में आगे आई started taking courses. गॉट So इट। there are undergrad courses in logic, philosophy, epistemology, ethics, and all that stuff. So that is how I got introduced to the field. और बाद में मैंने टीए नाइस किया। नाइस। So when ओके you ओके। learn and when you teach, that is when नाइस your नाइस। concepts become very clear. सो लाइक वहाँ पे Yeah. जैसे अभी आप इंडिया में भी आपने पढ़ाई की है, राइट? एंड नाउ यू आर इन अमेरिका। सो लाइक आपको क्या मेजर डिफरेंस क्या लगता है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, राइट? Hmm. तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू सी देयर? Oh, so for example, if you are studying in India, now I'm not sure about all the undergrad colleges in India, but most of them have a fixed curriculum that you have to follow, like even for राइट राइट। engineering. So that's not the case here. US में कैसा है, they have certain credits that they need to fulfill. So once you गॉट इट। fulfill those credits from your major, then you can take literally any course. You can take course in philosophy, music, arts, gender studies, literally anything, and that counts towards your grade. नाइस यार, So इंटरेस्टिंग। हाँ yeah, it's way हाँ। more education oriented and practical oriented, and you actually get to learn stuff that you want to learn instead of university fixing something on you. गॉट इट। सो बेसिकली इट्स लाइक क्रेडिट Yeah, सिस्टम, एंड आप उसमें yeah, अपने क्रेडिट्स चुन सकते हो कि आपको yeah, किस, मतलब मेजर एक क्रेडिट पूरा हो गया, देन यू कैन चूज योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने का मन है, yeah, राइट? exactly. Yeah. इंटरेस्टिंग। नाइस नाइस यार, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लाइक राइट नाउ जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थियोलॉजी एंड Mm-hmm. स्टडी ऑफ रिलीजन, राइट? Yeah, सो लाइक व्हाट इज द मेजर correct. डिफरेंस? अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, बेसिकली हम क्या बोलेंगे, क्या होगा Yes, मेजर yeah. डिफरेंस? So to put it in single sentence, theology is the study of the nature of God, whereas religious studies is the study of people who talk about God. So it has not got anything to do with philosophy of religion as such. Religious studies is more about study of people, cultures, traditions, customs, festivals, how the religion has evolved. It is closer गॉट to इट गॉट इट। anthropology than it is closer to philosophy. नाइस नाइस, समझ गया मैं। मतलब वहां पे हम गॉड के नेचर के बारे में बात करते हैं थियोलॉजी में, Yeah, राइट? अबाउट गॉड वी आर डिस्कसिंग, बट हियर वी आर टॉकिंग correct. अबाउट द पीपल हु ऑलवेज बीन थ्रू दिस साइकिल, जहाँ पे Yeah, वो गॉड के बारे में कैसे कल्चरली उन्होंने चेंजेस लाए वगैरह वगैरह, है ना? yeah. Like एक इंटरेस्टिंग। particular religion के traditions कैसे evolve हुए, and वो culture कैसे evolve हुआ, traditions में internal divisions कैसे है.
How do Nice, political nice. factors shape it? So yeah, yes, sir. Right, right. So like, how do you Yeah. get into content? Content कैसे start हुआ? Like if like you are in totally into Mhm. science field and studies and everything. Content कैसे start हुआ? Yeah, so basically, ये जो सत्यलोक का पेज है, that is like हाँ. from 2020, 2019. बहुत पुराना पेज है. हम्म. Back अच्छा, then, I अच्छा. just used to post about stuff that is academic or screenshots डालता था textbooks के. हम्म. This is the stuff I've read. It's quite interesting. बाद में थोड़ा develop होके started making videos. So the YouTube channel that you'll see right now of Project Satyalok, that is like हम्म. a group project kind of thing, जहाँ पे हम्म. multiple लोग थे. But I was always the creator of that. But ओके, अभी ओके, बाद ओके. में, yeah, I like I took over and started making reels on philosophy as well, not just religious studies. और ये जो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं, लाइक स्पेशली मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस स्टडीज एंड रिलीजन इटसेल्फ, हम्म. क्योंकि एकेडमिक हम्म. रेफरेंसेस चेक नहीं करते एंड फिलोसफी हम्म. उसके पीछे की समझने की कोशिश नहीं करते, सो दैट इज प्रॉब्लमैटिक. राइट, राइट, राइट. लाइक आई हैव सीन, लाइक मैं खुद भी अपने आप को उस जगह रखता हूँ कि जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट एग्नोस्टिक एथिज्म, राइट? तो मैं या भी एक टाइम तक, लाइक क्या होता है कि जब आप स्टडी आपका उस बैकग्राउंड का नहीं होता, तो व्हाट यू डू इज कि यू सी पॉप कल्चर रेफरेंसेस, आप देखते हो कि क्रिएटर्स क्या या बात कर रहे हैं, यू सी अदर पीपल आर टॉकिंग एंड यू सी सिमिलर टर्म्स यूज, एंड आपको पता चलता है कि मास में भी गलत टर्म्स यूज हो जाती हैं कई बार, ठीक है, आपको बस पता नहीं होता है, या बट यू विल सी दैट. एंड वंस यू स्टार्ट रीडिंग, वंस यू स्टार्ट रिसर्चिंग, देन यू रियलाइज कि नहीं यार, ये अभी तक मैं बताऊँ गलत बोलता आ रहा था. तो राइट, तो आई या थिंक दैट इज एन इफेक्ट जो मैं बोलता हूँ कि डोमिनो इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग है, कि अगर किसी एक बंदे ने, जिससे शायद उतना बैकग्राउंड नहीं है, उसने एक बार बोल दिया कहीं, तो देन अदर पीपल जिनका भी बैकग्राउंड नहीं है वो भी वो फॉलो करने लग जाते हैं, या बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च एंड सी कि क्या है, और एक ऊपर से डेफिनेशंस को लेके बहुत वो भी है कि पर्टिकुलर या डेफिनेशंस को फॉलो करने का उतना ज़्यादा वो है भी नहीं. सो दैट इज द थिंग. एंड या ऑन दैट टॉपिक पर्टिकुलरली जहाँ हम बात कर रहे थे कि एथीज्म, एग्नोस्टिज्म, तो उसके अराउंड आपका एक जो अभी रिसेंट आर्टिकल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे को, तो उसके बारे में बात करते हैं. इफ यू वांट टू लाइक या शेयर द स्क्रीन एज वेल, तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल. Yeah, or if you want, you can share it because मैं अभी tablet पे हूँ, so I'm not sure if I can अच्छा, अच्छा, share the अच्छा. screen. या Yeah. ओके, ओके, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट. Mhm. इज इट विजिबल नाउ? Yes, yeah. ओके, ओके, ओके. सो लाइक डू लेट मी नो कि अभी क्या चल रहा है स्क्रीन पे, बिकॉज आई कांट सी इट, बिकॉज अभी मैं वो स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो डू लेट मी नो कि Yeah, अभी yeah. मैं सही हाँ, ठीक है, तो दिस इज द आर्टिकल यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट? Yes, correct. Yeah. So मैंने अभी ये कुछ दिन पहले लिखा है. It says Empty Rebellion: The Philosophical Shortcomings of Modern Indian Atheism. So notice the word modern and Indian because there are people हम्म. in other countries who are actually philosophical atheists. So उन्हें पता हम्म. है कि atheism का मतलब क्या है. But here it's हम्म. clearly not the case. And then I have cited some of the people who have a very great following. कि उनके पास ओके, ओके. 3 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है, but फिर भी they are not interested in actually pursuing the subject. So that is what this राइट, राइट, article राइट. is, yeah, focused on. हम्म. And what I've discussed हम्म. here कि इंडिया में कैसे है कि इंडिया में people are atheists due to two reasons. हम्म. So I've created a dichotomy. One of them, हम्म. like one of the groups, is the people who are politically atheists. They are गॉट इट. inspired to become atheists because of their political motivations. But on the other hand, there could be people who are also हम्म. philosophically atheist. So हम्म. that is the one that is actually closer to the traditional view of atheism. So पहले मैंने इस आर्टिकल में पूरा उस पर डिस्कशन हम्म. किया है. राइट, Like what राइट, is राइट, लाइक लाइक. philosophical atheism? हम्म. Yeah. So if you scroll down, yeah. So if you scroll down a little bit, yeah, इधर मैंने dichotomy introduce की है कि या political और दिस सिलेबस. philosophical. Yes, राइट, correct. राइट. सो लाइक फिलोसफिकल एथिज्म बेसिकली है कि व्हेन लाइक देयर इज अ सर्टेनिटी, आप बोल सकते हो कि देयर इज नो गॉड एंड आई डोंट बिलीव इन गॉड, रिगार्डलेस अब मुझे कोई क्या भी मतलब एविडेंसेस लाके दे दे, राइट? Right. So basically, atheism, theism, agnosticism, philosophy, mein, all of हम्म. this cannot be just psychological states. They have to be ओके. propositions. So गॉट इट, गॉट इट. propositions का मतलब क्या होता है कि any sentence that is capable of हम्म. being true or false, that is called a proposition. That हम्म. works on bivalency. Like it can have two values, either true or false. राइट, राइट, So राइट. every sentence that we analyze in philosophy, that needs to be हम्म. a proposition. हम्म. So
the proposition of atheism, proposition of theism, and proposition of agnosticism is what I've defined in the article. So हाँ exactly. So what is Okay. atheism में आप जो definitions देखेंगे और जो मैंने citations दिए हैं, all of these are famous scholars. Like Graham Oppy Right, is right. considered to be epitome of atheistic brilliance, if you want to call it that. Right, 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 right. So yeah, so this is what the definition is. अभी इसमें भी एक broad category है and एक particular category है. So अच्छा, the अच्छा. broader category is like a huge claim which says there are no gods. So this is like a much Okay. broader claim which is more like a universal quantifier. There are no gods. Got it, got it. Whereas इसके And particular भी हो सकती है. God does not exist. Yeah. ओके, ओके, ओके. एंड लाइक इसमें ये भी तो होता है कि लाइक एक हार्ड एथीज्म होता है, लाइक एक जिसमें आप मतलब इसका मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर इट. सो लाइक देयर आर पीपल, एक तो हार्ड एथीज्म होता है, एक सॉफ्ट एथीज्म होता है, राइट. मतलब मेरे को उसमें फिर डाउट हुआ था बिकॉज सॉफ्ट एथीज्म में फिर वहीं एग्नोस्टिज्म में आ जाता है. लाइक सॉफ्ट एथीज्म इज बेसिकली लाइक टॉकिंग लाइक कि मेरे को अभी दिखता नहीं कुछ, मेरे पे अभी कोई प्रूफ नहीं दिखता, मतलब तो दैट्स व्हाई आई वुड कंसीडर इट सॉफ्ट, लाइक इन द साइड ऑफ सॉफ्ट एथीज्म. बट आई बिलीव कि वो एग्नोस्टिज्म साइड में आ जाता है ना. अगर आप Yeah. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्रूफ, देन यू आर इन द एग्नोस्टिक साइड, राइट. Correct. Yeah. So let me like unpack it. So for example, श्योर, श्योर. there are two propositions. One of them is God exists. This is a proposition. The negation of this proposition is God does not exist. तो ये दो propositions हैं, दोनों की truth values हैं. गॉट इट. These two propositions are contraries. If one is true, the other is false. राइट, So राइट, राइट. from this, let's say if you believe the proposition God exists. So when I'm talking about belief, there are three doxastic attitudes that a person can have towards a proposition. Either the person can राइट, राइट. believe, मतलब उसका विश्वास है कि ये proposition सच है, और the person can disbelieve. इसका मतलब उसका ये विश्वास है कि ये proposition गलत है या फिर झूठ है. और the third attitude is he suspends judgment. इसका मतलब ना ही अच्छा, उसका ये विश्वास है कि ये सच है और ना ही ये विश्वास है कि ये झूठ है. He simply झूठ है. suspends belief. Yeah, so that third category would be agnosticism. So, regarding these two propositions, God exists and God does not exist. If you believe the proposition God exists, which means you believe it is true, then you are a theist. ठीक है. If you believe the proposition God does not exist, तो इसका मतलब आपका ये मानना है कि you believe the proposition God exists is a false proposition. राइट, राइट, राइट. इज नॉट ट्रू Yeah, बेसिकली. exactly. So when you say that proposition is false, it commits you to the negation of that proposition, which is God does not exist. Interesting. So that is what So atheism is. basically, so like whenever we talk about this, and like I have seen streams वगैरह, तो usually people what think is कि whenever somebody is making a claim that God exists, then that person have the burden of proof, right? But at the same Yeah. time, if a person is denying the existence of God, so usually people say कि they don't have to prove anything. The person who is making the positive claim have to like give the burden of proof. But the person who is negating the claim, but here if the person is negating the claim, that is also a positive claim, right? So Correct. then, Yeah. yeah, then that person also have to like give the proof, right? Yeah, correct. So basically, if you are claiming that the proposition God exists is a false proposition, so you are claiming the truth value of that proposition. And if you're saying it is false, then by valency ke mutabik, its negation should be true. Right, right. So if negation is true and it commits you to the negation, so God does not exist is what you believe in. But So on the that is other a hand, positive statement, right? Right. correct, yeah. So both believe in the proposition God exists and belief in the proposition God does not exist. Both of these are making claims. The one who is not making a claim is the person who suspends judgment from both propositions. I neither believe God exists nor do I believe God does Not. not exist. Yeah. So this is the third attitude, and that is अगर आप नीचे जाएंगे तो 1 point, I guess second section में I'm talking about doxastic attitudes. Yeah. Yep. ये है ना? Yes, correct. Yeah. So look at formalizing doxastic attitudes. So नीचे अगर आपने देखा होगा, तो I say ये belief. तीनों. What does that mean? It means an agent believes P is true. Right, right. This, Disbelief is. yeah, B is false. And if you neither believe P is true nor false, then you are suspending judgment. So clearly हमें दिखाई देता है theism, atheism, agnosticism.
right. So like whenever we talk about this कि there is an hard atheism or soft atheism, तो ये कैसे definition में exist करता है ये? No, it is not even mentioned in academic literature because, as a matter of fact, अगर आप ये OP की book पढ़ेंगे, so OP हम्म himself says that no benefit comes out from defining strong and weak atheism. Because right. taking it out of context, it does not contribute to anything in the debate. So atheism should be defined as the belief in the proposition there is no God or God does not exist, and theism should be defined as belief in the proposition God exists. Now there are two contrary Got it. propositions, and there can be a debate. अभी एक So like whenever yeah, go continue. on. Yeah, so basically लोग इधर जो कहते हैं lack theist जिन्हें हम कह सकते हैं, they say that no, I'm not claiming that God does not exist. I'm simply lacking belief in the proposition that God exists. So इसलिए अच्छा. so इसलिए मैं उनको दो सवाल पूछता हूँ. How to counter such claims? So I ask them, do you believe the proposition God exists? So the person says no. No. Then I ask him the second question. Do you believe the proposition God does not exist? अगर इधर उस इंसान ने हाँ कह दिया, then he's actually an atheist. अगर इधर भी वो Right. इंसान ना ही कहता है, so what is the difference between this person and the person who is claiming to be an agnostic who also lacks belief in both? Exactly. There's तो no difference. it's like कि Yeah. it's like if you say कि मेरे पे अगर कोई evidence नहीं है, that is why I am saying कि I am an atheist. तो that is also similar to like agnosticism, right? वहां पे वो भी Exactly. ये बोल रहा है कि Exactly. मुझे भी नहीं पता. एविडेंस तो किसी साइड का नहीं है ना, एविडेंस तो इस साइड का भी नहीं कि Yeah. गॉड एग्जिस्ट करता है, एविडेंस तो इस साइड का भी नहीं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है. तो Yeah. वो फिर एंड में आके घूम के उसी पे जाता है, एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर जा जाता है फिर एंड में, राइट? Correct. Yeah. So basically, if you suspend judgment, if you don't have evidence to believe either case, you should suspend judgment. So suspending judgment is what is meant by agnosticism, doxastically. अभी राइट. agnosticism का और एक thesis भी है, which is called epistemic thesis. That is basically the claim about knowledge. That neither ओके ओके. atheism nor theism is known to be true. So अच्छा, इसके बारे हाँ, में राइट. इसके बारे में मैं और एक आर्टिकल लिखूंगा, like what exactly is agnosticism, what is the defense for agnosticism, what are arguments for agnosticism. लाइक बट एपिस्टेमोलॉजिकली हमें मतलब ये भी नहीं पता ना कि हम कितना पता कर सकते हैं. लाइक वी डोंट इवन हैव द Yeah. आइडिया ऑफ नॉलेज कि हम जो पता कर रहे हैं वो एक तो कितना ट्रू है, इसके ऊपर डिबेट है, देन किस लेवल तक हम जान सकते हैं वो भी एक डिबेट है, Yeah. राइट? Correct. Yeah. Epistemic certainty is itself debatable. राइट. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और ये जो आपको इधर लाइक symbols दिखते हैं, so these symbols are actually coming from formal logic, which is a very common thing in 20th century philosophy. क्योंकि 20th century philosophy की शुरुआत ही analytic tradition से हुई है, like Frege, राइट. Russell, Wittgenstein. So all of them were analytic philosophers. इंटरेस्टिंग. काफी इंटरेस्टिंग था ये आर्टिकल, मैं जब पढ़ा था मुझे काफी मजा आया था. एंड Yeah. ओवरऑल हाँ, बिकॉज मैं इसके ऊपर मैंने लाइक इससे पहले आर्टिकल से पहले कुछ टाइम पहले आपसे बात भी की थी रिगार्डिंग दिस ओनली, बिकॉज आई वाज Yeah. रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक. मैं देख रहा था तो आई वाज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड वो बहुत परफेक्टली आर्टिकुलेट करके आपने इस आर्टिकल में डाल दिया. सो Yeah. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड इट. बिकॉज Exactly. चैट जीपीटी पे मैंने चेक किया ना जब, तो मेरे को चैट जीपीटी ने काफी वो कर दिया, कंफ्यूज कर दिया था इस चक्कर में. Yeah. आई वाज चेकिंग ऑन चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी वाज सेइंग सिमिलर थिंग्स अलोंग द लाइन. तो फिर मैंने चैट जीपीटी से क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया. फिर मैंने Yeah. इनमें चैट जीपीटी से पूछा कि इफ masses start believing in the wrong definition, it doesn't make that definition the right definition, Yeah. right? Correct. So Yeah. then it agrees with me. Yeah. Then उसने बोला कि then it's fine, yeah, if that is the Yeah. case then it agrees on me. But before that it was arguing कि नहीं लोग ऐसे मानते हैं, लोग वैसे मानते हैं. तो there is a term which people generally use, that is agnostic atheism. However, when I ask कि भाई by this logic, then if the masses start believing in the wrong definition, it wouldn't change the meaning of that definition, right? So Yeah. then it Correct. agrees. Yeah, so Yeah. फिर मेरे को ये हो गया Basically कि इधर भी चलो Yeah. Basically उस आर्टिकल में भी मैंने नीचे ये प्रूफ किया है formally why agnostic atheism is problematic because of the words agnostic and atheism going together. Yeah, exactly. So इधर भी आपने अगर देखा होगा, so थोड़े नीचे आप जाएंगे तो I have even provided a formal proof. Yeah, exactly. या Yeah. और इसमें एक ही सिर्फ assumption है. The thing that I'm assuming is the JTB model of knowledge. Like, what do you mean by knowledge in that case? So इसमें एक ही सिर्फ assumption है, and from that assumption you can prove it formally. राइट Yeah. इंटरेस्टिंग. And it's not even an assumption because JTB is pretty standard. Like
JTB basically stands for justification, truth, and belief. Truth and belief. So Right, right, right. knowledge in epistemology is usually accepted as justified true belief. इसमें एक problem भी Right, है, right. which is called Gettier अच्छा. problem, which was found out by Edmund Gettier. But there are some cases which are Gettier cases. It does not apply to all. इसमें अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा. अगर deep में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि that just shows that JTB is insufficient to define knowledge. Okay, okay. Yeah, but it does That not till invalidate now, JTB. yeah, exactly. Like it's Yeah, like कि हमारे पास that is the best thing that we have till now. मतलब exactly. Yeah, it's like that. हाँ, कि हमारे पास अभी तक इससे better कुछ हमें नहीं मिल पाया तो हम इसे follow करते हैं. Yeah, yeah, interesting, interesting. तो like yeah. ये तो काफी इंटरेस्टिंग था बट लाइक जैसे फिलोसफी में भी व्हेन वी टॉक अबाउट थीज्म एथीज्म एंड देयर आर मल्टीपल फिलोसफर बट यूजुअली आज के लोगों को लगता है कि जो लोग या तो थीज्म साइड पे हैं दे कैन नॉट बी रैशनल बट आई सॉ सम पोस्ट राइट जिसमें यू कवर्ड ऑल द फिलोसोफर दोज हु वर Yeah, रैशनल but at the same time used to believe in God, right? So like can you yeah, just explain on that? yeah. Basically, Like people confuse between rationality and rationalism. अच्छा. Rationalism was a proper school of thought in philosophy. और ये जो चालू हुआ था वो रेने देकार्त, then we have Leibniz, then we have Spinoza. All of these are called great rationalists. तो rationalists का ये मानना था कि we can gain knowledge about the world purely through mind itself, without any sensory Got it. experience. So, for example, अगर Okay. आप रेने देकार्त ही देखोगे, so Rene Descartes was very much inspired by how we do things in mathematics. He was the founder of analytic geometry. So Rene Descartes himself was impressed by the way we do things in mathematics and deductions. So वो कहते थे कि okay, in mathematics we begin with some things which are quite obvious, which hardly anyone can doubt, and from those things we deduce things and proceeding logically, step by step. We start reaching conclusions which are really not obvious. And that is something that impressed Rene Descartes. So he said, अच्छा ठीक है, क्या मैं यही concept non-mathematical अपने propositions में लगा सकता हूँ? Yeah. So that is how he reached the concept of, the rationalism. And he rejected sensory experience as, a tool for gaining knowledge about the world. क्योंकि उनका ये मानना था कि sensory experience can fool us. They do not take us to the truth. And the famous example he used to cite is जब आप बोतल में एक इधर अगर आप रखोगे कोई पेंसिल अंदर तो वो अंदर से टेढ़ी नजर आएगी. Now this is the राइट राइट. optical illusion. We know that it is because of refraction. But रिफ्रैक्शन या. appearance wise, our senses are being deluded here. It's not the pencil that is bending. So this is a simple thing that he explained. So senses cannot be relied, but your mind can be relied, and that is what you are, irreducible as I am the mind. Like So similarly on the please check lines it. ये ना प्री-सोक्रेटिक में भी देयर वाज अ डिबेट बिटवीन हेराक्लाइटस एंड Yeah, पार्मेनिडीज. ठीक है, yeah, वो भी सिमिलर था काफी. उनमें से एक बोलता था कि एवरीथिंग इज फ्लक्स, एक बोलता था एवरीथिंग इज चेंजिंग, एक बोलता था कि yeah, सेंसेस पे बिलीव कर सकते हैं एंड देन एक बोलता था कि नहीं आप सेंसेस पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते हो बिकॉज yeah. सेंसेस आपको हर रोज धोखा दे रहे हैं. आपको हर रोज आपको Exactly. जब आप देखते हो तो आपको एंड में आसमान और जमीन मिलती हुई दिखाई देगी जब आप दूर से एंड में Yeah, देखोगे बट दैट इज नॉट ट्रू राइट. तो yeah. इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव ऑन सेंसेस फॉर द रियल नॉलेज. Yeah, राइट and that राइट. is exactly what the rationalists believed in. जैसे Spinoza भी उनका भी यही मानना था. It's just that Descartes talked about mind-body dualism, so he talked about dualism. So whenever we hear the word Cartesian dualism, it is coming from Descartes. And then even in geometry, like आज हम जो सीखते हैं coordinate geometry में, when we hear about Cartesian system, rectangular system, that's actually coming from Descartes. Every time you hear the word Cartesian, it comes from Descartes. So yeah, Interesting. and इसके बाद Spinoza, and then Leibniz was like an intellectual giant. Leibniz could have been the founder of mathematical logic अगर उन्होंने उनके thoughts तो document किए होते, not just as footnotes but actual thesis. But वो वही बहुत वही वही. बाद में हुआ, like Frege and Russell के like 20th century में हुआ. वो Leibniz के time पे ही हो जाता. All of them were Interesting, theists. interesting. Because like I have seen this idea, like I am personally a genuine agnostic. मतलब genuine कि मेरे को सही में नहीं पता है, मैं सही में जानने को Yeah, राजी हूँ और मैं दोनों साइड का सुनने को राजी हूँ. कोई मुझे आके yeah, बोलेगा कि भाई ये साइड में ये प्रूफ है, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया. कोई मुझे बोलेगा नहीं है इसका प्रूफ है, मैं बहुत बढ़िया.
तो मैं अभी उस स्टेज पे हूँ कि आई डोंट वांट टू बिल्ड एन ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि इट्स Correct. ह्यूज भाई, इट्स ह्यूज. हाउ कैन आई जस्ट वेक अप वन डे एंड थिंक कि अरे भाई मेरे को आइडिया हो गया बिल्कुल सब. एंड सबका अपना अपना, लाइक जो बिलीवर्स हैं वो ये मानते हैं कि उन्हें बिलीव करने से शांति मिलती है, उन्हें लाइफ में Yeah. लाइक उन्हें एक पर्पस मिलता है. तो इट्स ए चॉइस, राइट? बट लाइक व्हाट Yeah. डू यू थिंक, अगर हम बात करें रिलीजन के कॉन्स्ट्रक्ट से, तो देन यू डोंट थिंक कि देयर आर more bads on the side of religion than good, or is it vice versa? Yeah. No, so I think dono side hai religion ko. For example, some of the things that religion has done are definitely dangerous to humanity itself. So, like for Hmm. example, some of the social evils that were perpetrated, you go into Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Jainism, all religions. There Hmm. is some or the other thing which is today harmful to the society if it is followed Hmm. dogmatically. But on the other Hmm. hand, religions का बहुत positive point भी ये है. For example, if you come to the United States, इधर भी Hmm. Christian nationalism है, जैसे इंडिया में हिंदू nationalism है. Hmm. So Right, right, right. like, हाँ. yeah, इधर भी है. But the thing is, majority of the hospitals and all that stuff that is available in the US, वो Hmm. बहुत सा funding Christian sources से आता है. Like the hospitals could be Catholic hospitals that provide free services. और ये सब Hmm. अगर आप देखोगे, so that is because of the religious belief. So on top Hmm. of it, अगर आप पूरे पूरे anthropology side में जाओगे, so religion has contributed to literature, arts, architecture, poetry, so many wonderful things that come from religion. Hmm. Rather उनका Right, origin right. religion से हुआ. Philosophy, like the main thing that comes from religion. Hmm. So Hmm. yeah, so I value religion, but I don't follow any religion dogmatically. I'm just I Exactly, study religion. exactly. I don't practice any Hmm. religion. तो लाइक व्हेन यू आर इन द क्लास, जैसे होता है वहां पे, अब जैसे रिलीजन की अगर क्लास हो रही है, तो लाइक कहाँ तक पर्सनल बिलीफ रखता है इंसान, और कहाँ तक नया सीखने की कोशिश करता है? जैसे अब आपकी जो क्लास होती होगी उसमें भी कुछ स्टूडेंट होते होंगे जो एथीस्ट होते होंगे. लाइक Mhm. देयर आर पीपल इन योर क्लास जो एथीस्ट हैं एंड जो रिलीजन की स्टडी करने आते हैं. Yeah, definitely. So most of the professors that you'll find in religious studies, they're agnostics. हम्म. Like they know what they are studying is हम्म. not actually true, but they still study it because they value the culture that has evolved with it. So ये तो है. और हम्म. students भी होते हैं. हम्म. Yeah, so many of the students sometimes they get confused, especially with Eastern religions. क्योंकि Western हम्म. religion में it is pretty straightforward. क्योंकि या Abrahamic एग्जैक्टली. religion वगैरह. Yeah. हाँ, बहुत सीधा So सीधा है वो. एक किताब है आपके पास, yeah. आप उसे सब्सक्राइब कर लो, यू आर गुड टू गो. हाँ. Yeah, exactly. हाँ. And on top of it, Abrahamic religions, mein, there is a divide between religion and philosophy and science. So it is like science is अच्छा. reactionary to the religion. Whereas in the Indian tradition, especially, Buddhism, हम्म. Jainism, Sikhism तो बहुत बाद में आया, but Buddhism, हम्म. Jainism, Vedic Hinduism, हम्म. इधर philosophy सिखाई जाती थी, astronomy सिखाई जाती थी, mathematics हम्म. सिखाया जाता था, but that was within the domain of religion. So there was never a dispute वही. between philosophy and religion. जो राइट. वेस्ट में सो ऑन हुआ. दिस टॉपिक, या ऑन दिस टॉपिक आई हैव लाइक, मेरे को ये जानना था, जैसे यूजुअली व्हेन आई लाइक आई टेल समवन कि देखो फिलॉसफी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि वेस्ट में फिलॉसफी है, देयर इज इंडियन फिलॉसफी एज या वेल, एंड देन वी टॉक अबाउट कि भाई ऐसे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है. तो वो बोलते हैं या कि नहीं नहीं, फिलॉसफी फिलॉसफी, मैं बोलता हूँ जैसे हिंदुइज्म, जो आज आप हिंदुइज्म फॉलो करते हो, दैट इज रिलीजन, बिकॉज आज हमने उसे रिलीजन बना दिया है, because या that is the need of the hour, right? If you have to survive as a religion, as cultural, so then you have to become a religion. But usually it या wasn't a religion, it was या a set of philosophies put together, जिसे हम आज हिंदुइज्म या सनातन ये सब हम बोल देते हैं हम. So like कहाँ पे कैसे हम डिस्टिंक्शन करेंगे कि कितना फिलोसफी है कितना रिलीजन है? एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट कि जैसे आजकल मैं सुनता हूँ कि जैसे स्क्रिप्चर्स का पार्ट है या फिर कोई बात हो रही है तो स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्क्रिप्चर्स कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी में लाई करते हैं? Okay, yeah, correct. So to answer your first question, how do we differentiate between philosophy and religion? So what is religion is rather the first lecture that is given in every religious studies class. What is religion? So ओके. religion को समझने के लिए there are three approaches. One is ठीक called है. the sociological approach, which was given by Emil Durkheim. और Durkheim ने उनकी एक definition दी. He is considered to be father of academic sociology. And ओके. the second approach is called psychological approach. So psychological approach was given by Sigmund Freud, but उनका थोड़ा negative view था religion का, because he himself अच्छा. considered to be an atheist. हम्म. But हम्म. when he studied religions, he essentially interpreted them based on ego, superego, Oedipus complex theory. हम्म. So हम्म. that is the second approach to look at religion. The third approach is the intellectual approach, which is basically the approach of anthropology, literature, linguistics, and all that.
और इसके आधार पर there are multiple definitions that are given in scholarly context. There is no one definition of the word religion, but all definitions have some or the other aspect that deals with these three fields. एक तो वो psychological definition होगी, या sociological होगी, या फिर intellectual होगी. So this is cleared the first thing in religious studies, ki what is religion. So once you have figured out what lies in the domain of religion, then you can differentiate that from philosophy. For example, you wouldn't call Plato's school as religion. Plato's academy Right, right. religious temple nahi tha. Yeah. वही So हाँ. yeah. So in that case, philosophy can be a part of religion, but the converse is not necessarily true. Yeah. Interesting. So now to answer your second question, कि scriptures कौन से हैं? So basically, अगर आप Indian tradition में देखोगे, so it begins with Vedic Hinduism, where we have the four scriptures, the primary scriptures. When we say Ved, we are actually referring to Samhita. But Samhita के बाद Brahman, Aranyaka, Upanishad सब है. So Upanishads form the Jnana Kanda of the अच्छा. Vedic tradition. So वहां पर philosophical dialogue है about Atma, about Dhamma, about nature of reality, doctrine of five, बहुत कुछ है. Upanishads के बाद जो डेवलप हुआ है धीरे धीरे, so उसमें षडंग सब डेवलप हुए. So 6 angas. So 3 of them अच्छा. are focused on the language. Like Shiksha is phonetics. Then we have Chanda, which is metrics. And then we have Vyakarana, which is grammar. Then we have Kalpa, which is rituals. Then we have Jyotisha, which is astronomy and mathematics, along with astrology. So ये सब डेवलप हुए. और उनके बाद धीरे धीरे simultaneously we had the development of Shada Darshana. That is where the actual philosophical dialogues happen. So we have Samkhya Yoga, Nyaya Vaisheshika, Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. So पेयर में Purva होते हैं ना ये Mimamsa, दोनों, मतलब लोग पेयर में yeah, बात करते हैं इन छह को, है ना? हाँ. correct, yeah. So Samkhya Yoga is always close. Nyaya Vaisheshika is close, and then we have Purva and Uttara Mimamsa. So the difference And between Mimamsa is that Purva Mimamsa deals with the earlier part of Vedic tradition, which is Ved, Aranyaka, Brahmana. Whereas Uttar Mimamsa deals with the later part, which is Upanishad. So this is one interpretation of Uttara and Purva. The other way to call it Uttara and Purva is Uttara Mimamsa developed later. So that's why, prior and posterior. गॉट इट, गॉट इट. सो लाइक Yeah. जब भी हम बात करते हैं वेदों के बारे में, तो यूजुअली क्या होता है, पीपल कंफ्यूज थीज्म, एथीज्म एंड आस्तिक एंड नास्तिक, राइट? Yeah. Whereas I don't think so it is particularly true, because Astik used to be the people who used to believe in the authority of Vedas, Correct. right? Yeah. And like there can be a people who is Nastik, who doesn't believe in authorities of Veda but can believe in God, right? Yes, correct. Yeah. So, and on the other hand, there can also be people who are Astic but are atheists. For example, Samkhya and Purva Mimamsa. So, Right, right, right. yeah, rather Purva Mimamsakas pride themselves for being empiricists. Um, they would consider every cognition as valid. अच्छा, अच्छा, अच्छा. So, yeah, so whatever cognition or experience you have, that is considered to be valid the moment it appears. So that's not the case in Buddhism. So they offer a critique for the Buddhist अच्छा. view of basically many things. There is deep philosophical aspect there, and there are But layers and layers regardless, of yeah. बट रिगार्डलेस कितना भी, जैसे एक जो हम बोलते हैं कि हमारे 3 हैं जो नास्तिक स्कूल्स हैं, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक, राइट? एंड देन 6 हैं Yeah. जो हमारे आस्तिक स्कूल्स हैं, राइट? बट रिगार्डलेस ये आस्तिक नास्तिक हो, बट इनमें मैंने देखा काफी सिमिलैरिटीज है. Yeah. जैसे बुद्धिज्म में और बाकी स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा जो आस्तिक स्कूल्स हैं एंड बुद्धिज्म में काफी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगे हमें. तो लाइक कैन यू जस्ट बेसिकली टॉप डाउन मैकेनिज्म से आप मुझे 9 में से जो 6 आस्तिक हैं उनका छोटा छोटा डिफरेंस बता दो कि ये 2 पेयर का ये डिफरेंस है, इन 2 पेयर का डिफरेंस है, इन 2 पेयर का ये डिफरेंस है, मोटा मोटा. Yeah, definitely. So basically, ये जो division है आपने सही बताया कि Astics are the people who believe in the authority of Ved. Nastic are the people who reject the authority of Ved. So, but multiple, like इनमें भी Astic and Nastic together believe on some concepts that are common in all Nastic and Astic. For example, samsara, karma, and dharma. So these 3 concepts are found in all the 3. I mean, all two, both the things, Astic and Nastic. राइट, Now, राइट. in Buddhism and Jainism, even though they believe in the concept of samsara, they believe in the concept of karma. Jainism also believes in the concept of soul, which they call jiva. And they also believe in the concept of liberation, which they call mukti.
लिबरेशन तो Buddhism, सब में ही, आई थिंक लिबरेशन भी सब में ही होगा। yeah, yeah, हाँ, definitely. चार वाक को छोड़ Yeah, के। correct. हाँ। Yeah. So, escaping the cycle of samsara that is present in Buddhism, हम्म। Jainism, and Hinduism. That is the main aim. हम्म। Now, once you हम्म। escape that cycle, Astika हम्म। philosophy most of the time says that you become one with Brahma, or you become one with the हम्म। supreme consciousness, whatever that हम्म। is, हम्म। Paramatma. हम्म। Nastika philosophy mein, there is no supreme consciousness as such which is governing the universe. So Jainism mein, हम्म। mukti is just the liberation of the soul. हम्म। Whereas in Buddhism, nirvana is slightly different because Buddhism does not believe in a permanent soul or self. They believe राइट in the राइट self, राइट। but not in the हम्म। permanence of it. अच्छा So, अच्छा। to explain the difference, Hinduism में rebirth के लिए the element that connects all the births is the Atman. सोल। Yeah, हम्म। correct. हम्म। So, for हम्म। example, to give an analogy, which is also given in the scriptures, अगर आप एक हम्म। माला देखेंगे, बीड्स 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 है हम्म। उस माला में, तो उस माला हम्म। में से जो बीड्स को करेक्ट हम्म। कनेक्ट करती हुई जो कनेक्ट थ्रेड किया है, गया है, हाँ। हाँ हाँ, yeah. वो सोल है, So हाँ। exactly, yeah. But that is not the हाँ। case in Buddhism. Buddhism says that the beads are themselves connected. They don't have anything ओ। common through them. अच्छा अच्छा अच्छा। That is the नाइस नाइस, difference. इंटरेस्टिंग। Yeah. और And लाइक then जो, या कंटिन्यू कंटिन्यू। हम्म। yeah. So in Astika now, when you dive deep into Astika, so we have Samkhya हम्म। Yoga. हम्म। Samkhya believes in like 24 elements which constitute all of अच्छा। existence. So there are ठीक 10 है। senses, there are basically 10 sense organs. हम्म। And then, there is a distinction between 24 elements basically. और उनमें से अच्छा। जो 24th एलिमेंट है दैट इज पुरुषा. सो उन 24 एलिमेंट्स में मनस भी आती है, प्रकृति भी आती है, महत भी आती है, बुद्धि भी आती है. हम्म। एंड द 24th is the purusha, which is the self. So that is हम्म। what Samkhya says. And Samkhya talks about the three gunas, sattva, rajas, tamas. हम्म। So that is a Samkhya idea. Yoga और सांख्य में फर्क ये है कि yoga is theistic, whereas Sankhya is non-theistic. So that is अच्छा। the difference between Sankhya and yoga. They are very close. हम्म। Their propositions are very हम्म। close. Because yoga also हम्म। talks about sattva, rajas, tamas, and yoga हम्म। comes from the word yuja, which is to join. राइट राइट राइट। The higher realm to the role. Yeah. So that is हम्म। yoga, yuja. So the only difference is that जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ तो सांख्य हम्म। ये कहता है कि ये जो सत्व रजस तमस का बैलेंस था हम्म। that was in perfect proportion. But हम्म। Purusha caused a disturbance, and that is why ये जो proportions थे ये imbalance हो गए. And from that, the world of name and form was created. The world of multiplicity was created. It अच्छा। went from indeterminate to determinate and all that stuff. Idhar, हम्म। Samkhya mein Purusha is not actively, consciously causing the disturbance for the sake of creation. हम्म। In yoga, that is happening. In yoga, the Purusha is consciously, actively causing that एक्टिंग। disturbance. So that, yeah, so that's theistic. Whereas राइट Samkhya राइट। is not theistic. Yeah. हम्म। And then we get to Nyaya Vaisheshika. So Nyaya Vaisheshika हम्म। is quite interesting because Nyaya is entirely a school of logic. How you develop हम्म। propositions, and they have the हम्म। concept of sthapana. So sthapana is basically a five-step demonstration, just like we have syllogisms in Western अच्छा। philosophy. Like if P then Q, P therefore Q. या So this is a syllogism. Yeah. हम्म। हम्म। Similarly, we have a five-step demonstration where we have sthapana, which is the first step of that is pratignya, which is your hypothesis. हम्म। And then how you get to proving that hypothesis is through that sthapana. हम्म। And then Nyaya हम्म। talks about different styles of debating, Vada, Jalpa, Vitanda, and all that stuff. हम्म। And गॉट Vaisheshika इट is the गॉट इट। school of atomism. So Vaisheshika talks about Dravya, which is the substance of the universe. So that is what Vaisheshika is. And it राइट explores राइट it राइट। in quite detail. So yeah, that's Vaisheshika. And then we get to हम्म। Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. So Purva हम्म। Mimamsa is more like a school of philology, which is the study of language. Whatever अच्छा। Vedas would, yeah. So whatever Vedas would say, they say that Vedas are not epistemological statements; they are moral prescriptions. So that अच्छा, is what इंटरेस्टिंग। Vedic, yeah, yeah. हम्म। So they हम्म। consider Vedic statements to be statements of dharma about morality, हम्म। हम्म। but they do not think that Ved have some source which is some kind of a creator.
अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट. लाइक इट्स Yeah, लाइक कि जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वेद इज द वर्ड ऑफ गॉड, लाइक और रिटन बाय गॉड, yeah, समथिंग लाइक दैट. yeah, yeah. So Nyaya philosophy says Ved have a source, and that is the Ishvara. Whereas Purva राइट राइट Mimamsa says राइट. no, they are apaurushaya. That is the word apaurushaya comes from. अच्छा अच्छा अच्छा. और उनमें डिबेट भी है, इंटरेस्टिंग. like even between Astika schools there was debate, like Nyaya versus अच्छा. Purva Mimamsa, and we see that in Udayan's Nyaya Kusumanjali. So उदयन ने बहुत propositions दिए हैं जो जिन्होंने डिफेंड भी किया है उधर. इंटरेस्टिंग So इंटरेस्टिंग. yeah, against Purva Mimamsa, Buddhist, Jains and stuff. And ओके Uttara ओके. Mimamsa is Vedanta, where we have Advaita, हाँ. Dvaita, Vishishta Advaita. Yeah. Mm-hmm. So like even in Vedas, like people think like there are philosophies written, but most of the Vedas Mhm. are consist of rituals and stuff, right? Yeah. Because if I'm not wrong, लोगों को लगता है कि वेदास में पूरे चारों वेदास में सिर्फ और सिर्फ फिलोसफीज हैं, बट वेयर एज जितना मतलब मैंने सुना है, जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, इट्स लाइक मोस्टली उसमें जो रिचुअलिस्टिक स्टफ है, ठीक है, हाउ टू Mhm. डू दिस, हाउ टू डू दैट, एंड उपनिषद एक वो वाला पार्ट है, या वेदांत आप बोल सकते हो Yeah. वो वाला पार्ट है जहाँ पे फिलोसफीज कंक्लूड होती है, राइट? Yes, correct. Yeah. Upanishad is the Jnana Kanda, whereas Vedic Samhita are the Karma Kanda. And हम्म. Ved mein, if you see Rigved is basically poems that were composed by the Vedic poets, हम्म. Rishi, Kavi, हम्म. jo the. And every हम्म. mandala of the Rigved has sukta, और हर एक सूक्त का कोई कंपोजर दिया है ऋग्वेद में ही. हम्म. फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद हम्म. के शायद सेकंड जो मंडल है, दैट इज द ओल्डेस्ट मंडल हम्म. लिंग्विस्टिकली, और सो उस मंडल में जो पहला सूक्त है अग्नि का, सो हम्म. दैट इज रिटन बाय सोमावती भार्गव. So, which is इंटरेस्टिंग. my name. But yeah, Somavati Bhargava is considered to be the composer of that sukta. So they are अच्छा compositions, अच्छा. they are poetry, हम्म. but they are ingenious हम्म. poetry because that is written in a particular metric form, following all the rules हम्म. of prosody. And it was passed हम्म. down, verbally, oral tradition थी, पूरी की पूरी. लिखित कभी नहीं थे वेद. हम्म. वही वही वही, अगर हाँ. तुम, वो तो लाइक yeah, ओरली, लाइक पोएम वाइज दे यूज्ड टू recite it to the next perfect. generation, and then they'll continue doing that, right? Exactly. हम्म. So basically, speech itself is considered divine in the Rig Veda. So whenever you say हम्म. it in the exact हम्म. way as it's supposed to be said, that is when you get the fruits of your action. और वेद में कर्म का अर्थ हम्म. बहुत सरल है. Karma is doing हम्म. the ritual. That is karma. हम्म. And how to do the हम्म. ritual correctly, that is dharma. राइट राइट So राइट. yeah, that is इंटरेस्टिंग. as simple as that. सो लाइक वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस, यूजुअली देखो एक जो बिलीवर है, लाइक अगर मैं आज की डेट में किसी बिलीवर की बात करता हूँ, तो दे लाइक Yeah. उनका क्या एक रास्ता रहता है, मैं बताता हूँ. तो फर्स्ट थिंग दे बिलीव इज दैट वेदास आर रिटन बाय गॉड, दे आर द Yeah. वर्ड्स ऑफ गॉड. पहला प्रपोजिशन का ही होता है. दूसरा ये होता है कि यू डोंट हैव टू, लाइक इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन, यू कैन नॉट लाइक क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Hmm. बट लाइक डू लेट मी नो, लाइक इज देयर एनीवेयर रिटन लाइक दिस कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते गॉड के एग्जिस्टेंस पे? यूजुअली व्हाट No. आई थिंक इज कि जितनी भी फिलोसफीज है उसमें ये लिखा गया है कि यू कैन यूज योर इंटेलेक्ट टू फाइंड आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, बट आई डोंट थिंक सो नो वेयर इट इज रिटन इन गीता और इन एनी शास्त्र वेयर वी कैन नॉट क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Yeah, rather, if you take a look at Rigveda itself, Nasadiya Sukta mein, the Rigvedic rishis themselves are questioning the first cause of the universe. राइट राइट राइट. Rigvedic हाँ. rishis themselves are taking an agnostic stance, where they say, who knows where the gods came from. Maybe the one who stays in the highest heaven, he knows, or maybe he may know not. So they are taking an agnostic stance themselves. So yeah, definitely. But for the ritualistic aspect, they would pretty much almost dogmatically say that नहीं, देवता तो होते ही है. Even अच्छा पूर्व अच्छा. मीमांसा अगर आप कहोगे, so पूर्व मीमांसा would say जो वेद कहता है वो सच है. वेद का कोई क्रिएटर है नहीं है, we don't give a shit about that. अच्छा, जो वेद वेद में कहता जो है लिखा है वो उसको, सच है. yeah, so for them Vedic statements are axiomatic. और अगर Vedic statement में कुछ लिखा है and that contradicts with प्रत्यक्ष, that is perception, कि for example वेद में लिखा है कि सेब का कलर ब्लैक है, या फिर अच्छा. zebra को सूंड है, हाँ ऐसा कुछ लिखा होगा. So in that हाँ case, it is not the Vedic statement हाँ. that is false, neither your perception is false. What is false is the interpretation of the word. वहां अच्छा गलती हो अच्छा. रही है. That is what they would say. नाइस नाइस. Yeah, इंटरेस्टिंग है तो कि yeah. बट लाइक जैसे व्हाट योर स्टैंड्स ऑन इट कि
like Veda, usually like people who are believer, hardcore believer, they usually think कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में है, like everything has written, every हर क्वेश्चन का आंसर वेदों में, but they don't realize कि वेद मोस्टली लोग जो बिलीवर हैं उन्होंने कभी अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ी नहीं है, ठीक है। जो Yeah, नॉन बिलीवर है मेरे को लगता है उन्होंने ज्यादा पढ़ी है, लाइक जो एथिस्ट है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ज्यादा पढ़ लेते हैं बिलीवर yeah, से, राइट। तो मोस्टली पीपल जो बिलीवर है वो ये मानते हैं कि वेदास आर द फाइनल ट्रूथ ऑफ दिस होल रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, एंड उसका सारा आंसर जो है वेदों में लिखा है। लाइक व्हाट योर स्टैंस yeah. ऑन इट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो लाइक दैट इज द केस। No, yeah, not at all. They were never supposed to be texts about science. अगर आप पूर्व मीमांसा के लोगों से पूछोगे, who literally take the word of Ved, अगर आप उनसे पूछोगे कि वेद क्या है, वेद सच है या झूठ है, तो वो कहेंगे कि धार्मिक नॉलेज के लिए वेद सच है, धार्मिक नॉलेज के लिए. अच्छा। So they say that Ved is not interested in providing material information about the universe. What it is interested in is providing information about ethics and moral norms, like moral philosophy. And whatever statements it makes about moral philosophy, they are prescriptive and they are necessarily true. बाकी अच्छा मैथमेटिक्स अच्छा वगैरह उसके लिए पूरा उनका ज्योतिष का पूरा अलग सेक्शन है जहां पर वो अच्छा मैथमेटिक्स के बारे अच्छा। में बात करते हैं. एंड दैट इज नॉट आल्सो दैट डेवलप्ड मैथमेटिक्स, बट यस, राइट राइट राइट, abstract हाँ। geometry. Yeah, abstract geometry, for example, Pythagoras theorem that we have. वो उधर डिस्कवर होने से पहले ऑलरेडी सुलभ सूत्रज में इधर है, है. हाँ। हाँ Yeah, हाँ, वो लाइक इवन and मैंने जब पाइथागोरस के बारे में मैंने पढ़ा था तो आई रियलाइज कि इवन देयर वर मल्टीपल सिविलाइजेशन, जैसे बेबीलोन में भी, इंडिया में yeah, भी उससे पहले वो प्रैक्टिस हो रहा था। आप उनके आर्किटेक्चर में yeah, देख सकते हो, आप हर जगह देख सकते हो। वो एट दैट टाइम उस बंदे ने बस वो, एक तो वो बहुत फेमस था अपने टाइम पे, एंड देन ही जस्ट आर्टिकुलेटेड इन सच अ वे कि वो बहुत फेमस हो गया उसके नाम से। yeah. Correct. Yeah, Pythagoras belonged to a school of philosophy which were purely, mathematicians, you can call them, but they were geometers. So yeah, Pythagoras belonged to that school. Bharat में भी, if you consider the Vedic rishis, to build the fire altar, जिसे अग्नि चयन कहते हैं, वो जो कुंड होता है अग्नि कुंड बीच में. So how to construct राइट। that fire altar? इसके लिए mathematics use होता था. And you can clearली see the verses in Shulba Sutra where they're talking about constructing squares, constructing diagonals, hypotenuse, and all that stuff. And that predates Pythagoras by quite a lot. Okay, okay, okay. So like whenever we talk about like God and like people who are from Hindu, religion, the problem is that they don't know anything because it's so vast. Like for other books, you can say, Yeah, for other religion, you can say that there is a straightforward thing to do, right? You have to yeah. just go through this book and you'll get there somehow. ठीक है, तुम almost Mhm. मतलब आपने subscribe कर लिया, you are almost there. बट इन Yeah, हिंदुइज्म में क्या है कि मैं वही कह रहा हूँ कि लाइक देयर आर सो मेनी मिथ्स, बिकॉज बचपन से कभी हमें क्वेश्चन करना नहीं सिखाते। लाइक इवन mm. हमारी जनरेशन से जो पहले वाली जनरेशन थी, दे नेवर सेड कि बेटे एक बार खुद तो पढ़ के देखो, हमें तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। बिकॉज वेन एवर दे टॉक अबाउट स्क्रिप्चर्स, गीताज, एंड एक तो काफी लोगों ने खुद नहीं पढ़ी है, बट जितना भी उन्होंने पढ़ा है, दैट इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द होल फिलोसफी दैट वी हैव, राइट। Yeah, correct. Yeah. Even गीता, अगर आप हाँ, गीता के बारे में कहोगे, so गीता is basically a Sankhya text. It was सांख्य originally a टेस्ट, Sankhya राइट। text. Yeah. और बाद में उसमें भक्ति के एलिमेंट्स ऐड किए गए. So when you say the current Hindus, they are basically following Puranic Hinduism, which evolved way later. और तब तक जो हमारे 5 मेजर सेक्ट्स थे, like Shaivism, Vaishnavism, Shaktism, Ganapatya, and some minor, folk traditions. So all of them were compiled together to create one concrete unit. कि इन सबको हम हिंदू अच्छा कहेंगे. अच्छा। That became Puranic Hinduism. तो उसमें बुद्ध भी आ गए थे क्योंकि बुद्ध को, बुद्ध was created as Buddha was declared as ninth avatar of Vishnu, which is definitely not the यप case यप। in Buddhism. Yeah, हाँ हाँ, मतलब देयर इज अ डिबेट आल्सो कि वो बुद्ध अलग थे, ये बुद्ध अलग हैं, लाइक yeah. दैट इज नॉट द केस फॉर श्योर। Yeah, exactly. इंटरेस्टिंग So, इंटरेस्टिंग। but yeah, Puranic Hinduism is what people follow today, and Puranic Hinduism is heavily inspired from Bhakti movement as well. So, Vaishnavism का जो पूरा foundation है, वो बाद में भक्ति tradition से बहुत influence हो गया था. So, for example, if you visit Maharashtra, we have the Varkari Sampradaya, we have Nath Sampradaya. So, Varkari Sampradaya is completely based on Bhakti. For अच्छा अच्छा। example, you might have heard of Jnaneshwari. So Jnaneshwari was written by a saint poet in Maharashtra whose name was Jnaneshwar, Santa Jnaneshwar. He's called Santa, saint. But he was basically a philosopher. He was talking about Advaita in his text, and he was अच्छा। providing an exegesis of Bhagavad Gita. And basically the thing to appreciate about that is Jnaneshwari is the first exegesis of Bhagavad Gita
in some हम्म। vernacular language other than Sanskrit. First in the अच्छा। history of India. और ज्ञानेश्वर ने जब नाइस। ये लिखी तब वो शायद 17 साल या 18 साल के थे. So yeah, he's नाइस यार, considered वेरी to be a, इंटरेस्टिंग। हाँ। he's हाँ। considered to be semi deity या फिर संत ही माना जाता है उन्हें. So this is हम्म। Bhakti tradition, and today's Hindus follow Bhakti हम्म। tradition. तो लाइक द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कि यूजुअली जो हिंदूज आज फॉलो करते हैं दैट इज पौराणिक Mhm. हिंदुइज्म, राइट? Yeah. बट लाइक इट डजंट टेक अवे एनी क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द अदर aspects of No. our philosophies. But that is Yeah. my point, like why don't we usually go through everything and then decides what's for them, instead of just getting only one school of philosophy generation by generation. Like मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि like this Puranic Hinduism and there are multiple different schools who talks about Yeah. only this, and they are also part of this Sanatan या फिर Yeah. Hinduism only, right? So like why Correct. Yeah. is that? Yeah. So basically, पुराणिक हिंदुइज्म जो बाद में आया है, जो पहले के षड दर्शन थे, वो बाद हम्म। में कहा जाए तो वैसे उनके प्रोपोनेंट्स कुछ बचे नहीं. लाइक इफ यू गो टू सांख्य, न्याय, वैशेषिका, देयर आर हार्डली एनी प्रोपोनेंट्स लेफ्ट टुडे ऑफ दैट स्कूल. अगर रिवाइवल अच्छा होगा, अच्छा। लाइक कल आके कोई हाँ वैशेषिका हाँ। खुद को कह देगा और सब टेक्स्ट पढ़ के उन पर प्रोपोजिशन संस्कृत में लिखेगा, तब वो आचार्य बन जाएगा अच्छा और वैशेषिका का रिवाइवल हो जाएगा. अच्छा But अच्छा। अच्छा। their proponents died out, and Puranic Hinduism took center stage. And this is very common in religions. Religions keep on evolving. Even if you अच्छा consider अच्छा अच्छा। Christianity में तो इतने denominations हैं. For example, we हम्म। just know Catholicism and हम्म। Protestantism. हम्म। But there are so many denominations. We have Jehovah's Witness, we have Eastern Orthodox, then we have, हम्म। Roman Catholic तो है ही. So there is a whole tree of denominations of Christianity. There are also हम्म। non-Trinitarian Arians, अच्छा which should not be Christians because they are non-Trinitarian. They deny the concept of Trinity, and they are अच्छा Arians, अच्छा। which means they don't believe that हाँ। Jesus is God. He might be Son of अच्छा God, अच्छा। he is the हाँ created being, but he is हाँ not God himself. हाँ, नॉट जीसस। Which exactly, which contradicts the main teaching of Christianity, that I and the Father are क्रिश्चियनिटी। one. Yeah. So, but हम्म। still they are Christians. हम्म। ओके ओके, सो लाइक व्हाट माय पॉइंट इज कि व्हेनेवर आई टॉक Mhm. टू अ बिलीवर, जैसे अब मैं भी Yeah. नॉन बिलीवर वाली साइड में नहीं आता, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार आई एम ऑलमोस्ट ऑन योर स्कूल ओनली। मैं Mhm. पैदा उस जगह पे हुआ हूँ, ठीक है, मैं दोनों साइड में से किसी साइड में नहीं मानता, बट दे समहाउ थिंक कि आई एम द वन हु इज आइदर फ्रॉम आउटसाइड और यू टॉकिंग अबाउट वो ऐसे हमारे रिलीजन के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, बट व्हाट यूजुअली दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसी रिलीजन के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से ये साफ साफ बोला गया है कि यू कैन क्वेश्चन थिंग्स, यू कैन talk Yeah. about if there is God or not. There are all multiple schools of philosophies existing in single umbrella, right? Yes, correct, perfect. Yeah. Rather, if you say Shramanic traditions, तो वो तो पूरे हम्म। ascetic traditions ही थे, जिनको अच्छा। ये rituals वगैरह सब में कोई interest था भी नहीं. And some हम्म। Shramanic traditions were Astika, which later came under Astika. Like for example, Natha Sampradaya, that is completely an अच्छा। ascetic way of life, monastic school है. हम्म। But it is Astika. हम्म। It believes in the concept of higher power, spiritual, and that can be connected. फिर योगा भी उधर आ हम्म। जाता है बीच में. So हम्म। yeah. So yeah, इंटरेस्ट। all these traditions together form Hinduism, which we can call Vedic Hinduism, हम्म। because the origin is हम्म। Ved. ये जो सब concepts है, वेद, हाँ। samsara, dharma, karma, yeah, हम्म। ये हम्म। पौराणिक हिंदुइज्म में भी वही concept है. ये तीन concepts को हाथ नहीं हम्म। लगाएंगे. ना ही हाँ हाँ, Hindus, वो ना ही आप। Buddhists, ना ही हाँ Jains. Yeah, हाँ हाँ, लाइक इट्स yeah, कॉमन इन एवरी स्कूल ऑफ yeah. फिलोसफी वेयर वी टॉक अबाउट कर्म, Hmm. जहाँ पे हम बात करते हैं लिबरेशन, दैट इज संसारम, एंड Yeah. एक और क्या था? कर्म, धर्म और हम्म। संसार. हाँ, धर्म, हाँ। Yeah. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। So वही है वही है, ये तो तीन मतलब रहेंगे हमेशा. हाँ, तो लाइक इफ यू हैव टू सजेस्ट समवन कि अगर कोई पढ़ना चाहता है कि लाइक दे वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक वी ऑल हैव बीन फ्रॉम स्टार्टिंग, हमने बस पुरानिक हिंदुइज्म को फॉलो किया है यूजुअली, हमें बचपन Yeah. से या तो गीता या रामायण, दीज टू आर द टेक्स्ट जो हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ हिंदू दैट यू शुड रीड, बट Yeah. व्हाट आर द टेक्स्ट यू वुड सजेस्ट टू समवन जो और पढ़ना चाहता है हिंदुइज्म के बारे में या इन जनरल और स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज के बारे में जानना चाहता है? Oh yeah, definitely. So I would recommend two books which are secondary sources. हम्म। तो पहले ही अगर ठीक तुम है। प्राइमरी सोर्सेस में घुसोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. हम्म। So start with हाँ हाँ, वो secondary बहुत sources मुश्किल first. होगा इंटरप्रेट करना, है ना? Yeah, हाँ exactly. Because हाँ। in those primary texts, some other primary texts are cited, and in those texts, some other texts are अच्छा। cited. So yeah, हाँ। so secondary sources के लिए one book, the first book that I would recommend is History of Indian Philosophy by Surendranath Das Gupta, and that is ओके ओके published ओके। by Cambridge University Press.
So he was हम्म himself a very famous philosopher, Indian philosopher, and he was हम्म a lecturer in Cambridge. He used to teach philosophy and Indian philosophy. हम्म और उन्होंने हम्म 5 वॉल्यूम्स में वेद से जाके पुराणिक ट्रेडिशन तक सब कुछ एक्सप्लोर किया है, इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो दैट्स व्हाई अच्छा ही अच्छा कॉल्स इट हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी. 5 वॉल्यूम्स है. हम्म सो दैट इज द हम्म, फर्स्ट बुक. द ठीक सेकंड है इज सेम नेम का हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी बट फ्रॉम रूटलेज क्लासिक्स. सो रूटलेज इज अच्छा अनदर फेमस पब्लिकेशन हाउस. और उसमें अलग अलग स्कॉलर्स ने लिखे हैं अलग अलग सेक्ट्स पे. सो दैट इज द हम्म सेकंड बुक. And if you want to ओके ओके directly start reading Upanishads, then the third हम्म book that I would recommend, which is the primary reference, and अच्छा that is earlier Upanishads by Patrick Olivelle. ओके ओके Yeah, ओके so these 3 books. Patrick Olivelle का तो Oxford University Press में publish हुआ है. Routledge is the second हम्म book, and हम्म Surendranath Dasgupta is by Cambridge University Press. They are academic books. They हम्म cite all the references. पैट्रिक ऑलिवेल में तो संस्कृत श्लोक भी दिए हैं, मतलब संस्कृत उपनिषद संस्कृत फॉर्म में भी दिया है. Or step-by-step translation है, symbolic and lexical both. So yeah, these 3 books you गॉट should इट start with to read all the other stuff in Hinduism. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैंने लिख लिए हैं ये तीनों मैं अभी Yeah, जाके खरीदता हूँ हाँ बढ़िया बढ़िया and मजा आएगा काफी हाँ yeah, and if you want to read about Dharma Shastras, which are another important part of Hinduism, Dharma Sutra and Dharma हम्म Shastra, हम्म जहाँ पे we have the most controversial text in India, which is Manusmriti. So that is a मनुस्मृति part हाँ of Dharma Shastra. Yeah. If you हम्म read Manusmriti itself, it's not that controversial considering the era in which it was written. Even today, अच्छा अगर अच्छा आप पढ़ोगे, हम्म उसमें से कुछ श्लोक ऐसे हैं कि बाकी के श्लोक को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं क्लियरली. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू अच्छा से अनटचेबिलिटी, सो वो अनटचेबिलिटी का हाँ मेंशन तो धर्म सूत्र में भी है, बट एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट स्टफ वेयर शूद्रस को खाना पकाना देना चाहिए. और अगर शूद्र ने खाना पकाया, मेंटेनिंग ऑल द हम्म डिकोरम, प्रॉपर हम्म डिसिप्लिन, तो वो जो हम्म खाना पकाया है दैट इज वर्दी इवन ऑफ द गॉड्स. अच्छा तो अच्छा ये अच्छा क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट करता है अनटचेबिलिटी को. हम्म So yeah, हम्म so if you want to read about that, then हम्म History of Dharma Shastras by हम्म Panduranga Vaman Karne. That is an हम्म excellent, like that's considered to be the most authoritative book on Dharma Shastra, हम्म even in Western गॉट इट academia. And गॉट इट गॉट उनको इट भारत रत्न भी मिला था, Panduranga Vaman Karne को. And it was हम्म published by Bhandarkar Oriental Research Institute, which is in Pune, which is an हम्म Oriental institute funded by Government of India. So you can also read that. ओके Yeah. Or सो लाइक Ramayana and टॉकिंग Mahabharata. अबाउट Yes. Yeah, हाँ sorry, sorry. कंटिन्यू 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 हाँ या और रामायण महाभारत के लिए रामायण का एक ट्रांसलेशन है which is given by Princeton University, which is by Goldman. हम्म So that's the हम्म Western thing. If you want to read हम्म more, indigenous translation, हम्म then you should read the critical edition of Ramayana. और अच्छा उसका अच्छा इंटरप्रिटेशन I guess विवेक द ब्रॉय ने दिया है शायद. So ओके yeah, that's for रामायण. और महाभारत की तो पूरी लेक्चर सीरीज ही है भांडारकर ओरिएंटल की. So you can हम्म definitely do it. So yeah, these are all the sources. परफेक्ट परफेक्ट मैं मतलब हो गया अगले 1 साल का काम हो गया ठीक है Yeah, सो they are pretty लाइक used. हाँ हाँ वही वही मेरे को नाम से और वॉल्यूम से आइडिया लग गया काफी तो Yeah. टॉकिंग अबाउट रामायण जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी अराउंड दैट कि जो लास्ट वाला पार्ट है दैट वाज नॉट ओरिजिनली रिटन मतलब वो हुआ नहीं एक्चुअल में लाइक वेयर वी टॉक अबाउट कि वो अग्नि परीक्षा एंड एवरीथिंग सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट Nice. So it is mentioned in Uttara. So Uttarakand, I guess, is what people definitely have a preference against. So Uttarakand, the word itself says posterior, and if you read Uttarakand, उसमें बहुत से ऐसे एपिसोड्स है जहां पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है एपिक के बारे में. लाइक अच्छा बेसिकली हम जो बैक स्टोरी कहते हैं. If you watch anime, so जब वो बैक स्टोरी के एपिसोड दिखाते हैं, that is exactly what हाँ Uttarakhand has a lot of times. अच्छा एंड अच्छा अच्छा उसमें अगर आप रावण का पोर्ट्रेयल देखोगे, सो इट हाँ इज वेरी इविल. लाइक रावण इज पोर्ट्रेड एज द मोस्ट इविल किंग. इविल पर्सन हाँ और वो संतान भी एक ब्राह्मण और एक राक्षसी की संतान है, रावण. हम्म और हम्म और जन्म से ही देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक विद रावण. दैट इज व्हाट इज रिटन इन उत्तराखंड. बट एट द सेम हम्म टाइम देयर आर सम कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन उत्तराखंड की धोबी के, हाँ हाँ बेसिकली धोबी ने राइट कहा. राइट या so that is हाँ also in Uttarakhand. या फिर the हम्म Shambhuk episode, where Rama goes and beheads a Shudra because he's reciting the Ved. राइट So राइट that is exactly, so that is a part of Ramayana. It is definitely a part of Valmiki Ramayana because critical edition में ये उत्तराखंड भी include हुआ है.
So you अच्छा. can read the critical edition. That's by University of Baroda. और हम्म. पूरी एक like 24 से 25 लोगों की कमेटी थी to find out हम्म. the word critical edition itself means भारत के सभी manuscripts रामायण के combine हम्म. करके उनमें से original manuscripts ढूंढने की जो प्रक्रिया है, that is called critical edition. हम्म. So हम्म. उसमें भी उत्तराखंड के हमें मिलते हैं. अच्छा अच्छा, तो So yeah, it बेसिकली is इट a वाज part of अ it. पार्ट ऑफ. Yeah, हम्म. and they consider it as an epic. So they don't consider it as a हम्म. historical text. Some instances of that can be history, हम्म. because there are very explicit references की eclipse की या फिर astronomical हम्म. references which can only हम्म. be made if you have already taken observations during that time. एक्चुअली हाँ. हम्म. Yeah, so ये तो है, but कुछ there are definitely mythical references as well. So it's more like हम्म. a conglomerate of epic and एंड हिस्ट्री. a mythical हम्म. aspect. Yeah. हम्म. गॉट इट गॉट इट. So yeah, सो टॉकिंग so अबाउट that is लाइक Ramayana. वी वर टॉकिंग अबाउट या कि जैसे आपने बताया कि मनुस्मृति में ऐसे टेक्स्ट है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, राइट, अबाउट द Mhm. अनटचेबिलिटी पार्ट. सो लाइक व्हाट्स Yeah, योर टेक ऑन दिस? लाइक वन सिस्टम, लाइक यूजुअली पीपल डिफेंडेड बाय सेइंग कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे इट वाज नॉट बाय बर्थ बट इट वाज बाय कर्म, right? Hmm. Usually this is what the argument is whenever somebody is defending against Yeah, about the this Varna system. But like what's your take on it? Like is like whatever it was, it doesn't matter, but right now is it really necessary? Like I don't think so that we have any right now any need for the caste system or the Varna system right now, right? yeah. Yeah, definitely. So, abhi to like in today's world, we, honestly, we don't need any of the other religious philosophies or even Hindu philosophy as such. Hmm. You can definitely find some aspects of Hindu philosophy that agree with modern science as well, like environmentalism, Hmm. Hmm. या फिर animal cruelty नहीं होनी चाहिए. Even though some Vedic practices did have sacrifices. Hmm. So, regarding Varna Shrama itself, so when you say that Varna is dependent on karma, that is Hmm. partly true. अच्छा. So it इसमें जो एक implicit assumption है, that is the Hmm. eschatology of rebirth, कि Hmm. संसार साइकिल जो है उसमें आप जन्म Hmm. जब लेंगे तो Hmm. आपके इस जन्म के कर्म will determine your Hmm. birth in the next will determine Next. your Hmm. yeah varna in the next birth. So Hmm. basically तीन चीजों पे वर्ण डिपेंडेंट है, जाति Hmm. कर्म संस्कार. So Okay. jati is what you are born with. So every brahman, a Hmm. brahmin proper, we can call it that, Hmm. is necessarily a jati brahman. अच्छा अच्छा. Yeah, but Hmm. that is not Hmm. sufficient. Just being born as a brahmin does not make you a brahmin proper. And Okay. the references themselves say this. Like अगर आप Hmm. अष्टाध्यायी का क्रिटिक पढ़ोगे, अष्टाध्यायी के ऊपर Hmm. टीका जो लिखी थी या फिर अष्टाध्यायी की कमेंट्री लिखी थी, तो उसमें क्लियरली Hmm. दिखाई देता है कि Hmm. ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण तो होता है, लेकिन Hmm. अगर उस पर उसमें जो गुण है that Hmm. determines the jati. But उसके कर्म और संस्कार अगर ब्राह्मण के Hmm. नहीं हुए, then that Hmm. person does not deserve the respect of a Brahmin, even though he is jati Brahman. वो केवल जाति Okay. ब्राह्मण जैसा रह जाता है. Hmm. But the person who is born as a Brahmin and Hmm. has guna and sanskara, sorry, Hmm. has karma and sanskara of a Hmm. Brahman, only that person is Hmm. considered a Brahmin proper. Hmm. So it is अच्छा अच्छा. dependent on birth and it is Hmm. dependent on karma, but Hmm. it's that cycle of birth and death. Hmm. So for So like example, continue yeah, continue. yeah. So for example, अगर इस जन्म में कोई शूद्र होगा जो इस जन्म में बहुत अच्छे Hmm. कर्म करेगा, सो Hmm. उसके नेक्स्ट बर्थ में उसकी जाति ब्राह्मण होगी. Hmm. और उसके नेक्स्ट अच्छा बर्थ अच्छा. में भी उन्होंने संस्कार उन पर ब्राह्मण के हुए और उनके कर्म Hmm. ब्राह्मण जैसे हुए, along with jati Hmm. being brahmana a necessary condition, तब जाके Hmm. he will be closer to मोक्ष. बट ये अगले जन्म अच्छा में अच्छा होगा. अच्छा. या So like it's like मतलब like usually what people say is कि at that time it was an hierarchy thing, right? या कि like people would like they give argument is कि ऐसा होता है कि to run the society you have to create hierarchies and that's why या this one system was या created, right? But तो then they'd say कि later on उसे like गलत तरीके से use किया गया, right? So like what's your take on it? डेफिनेटली. Like was it really necessary at that time or even now? Yeah, so at that time, if you take a look at it, we have to distinguish between caste system and varnashrama. अच्छा. So varnas are part of caste, but caste is more like a what can you call it? An administrative aspect or political aspect of the culture itself. Jatiya अच्छा अच्छा.
धर्मशास्त्र से नहीं आई है। वर्ण अच्छा धर्मशास्त्र से आए हैं। जातियां पहले से ही थी भारत के सिविलाइजेशन में, एंड दैट इज ऑल्सो अच्छा Ambedkar himself says this in his book that Manu did not हम्म create the castes. Manu theologized अच्छा about not theologized. Manu made the castes, religiously rigid. एक religious अच्छा foundation अच्छा दिया अच्छा गया castes हाँ को मतलब मनु के। एक कंफर्मेशन मिल गया लाइक लोगों को कि Yeah, टू एक्चुअली perfect. यूज इट फॉर देयर ओन गुड राइट परफेक्ट। और इसीलिए हाँ हाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज ट्राइंग टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, बट ये अच्छा जाति अच्छा की अच्छा सिस्टम इतनी डीप तक गई थी हर इंडिया के कोने में, एंड फाइनली पीपल कुड हम्म नॉट रिफॉर्म, सो फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन ही abandoned Hinduism, हम्म and then हम्म later he accepted Buddhism, and even then he did not accept हम्म all aspects of Buddhism. He only या accepted some aspects. Yeah, so सब that's why, एक्सेप्ट या yeah. पर अगर अंबेडकर का भी देखोगे तो वो Dr. Ambedkar says it clearly in his books like writings and speeches. The reason why I burnt Manusmriti and not Ved, like Ved और उपनिषद क्यों नहीं जलाए, मनुस्मृति क्यों जलाए, हम्म is because हम्म of Manusmriti, वो जो एक religious foundation मिला हम्म जातियों को, वो rigid होता हम्म गया and nobody could हम्म question the scripture because scripture में ही लिखा गया है, question कैसे करेंगे? So इसलिए to dethrone the authority of the राइट scripture, वो करना like that was important. टू मेक पीपल चैलेंज कि हम्म स्क्रिप्चर में कहा गया है वो सच नहीं है, ये इसकी अभी हमें हम्म जरूरत नहीं, नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हम्म करना पड़ेगा फॉर गवर्निंग द नेशन। सो दैट इज वेयर आई अप्रिशिएट राइट राइट अम्बेडकर फॉर व्हाट ही डिड। like वही है कि usually like people think like there is a distinction between like Hinduism and Buddhism like a lot but it's not a lot and you will see या some caste things in the like Buddhism as well like usually people if they read in depth they'll realize कि आपको उधर भी दिख जाएंगी problem that's why या Ambedkar मतलब उन्होंने fully नहीं अपनाया था they used to या like get away with some parts of Buddhism Yeah, correct. So hmm basically, what Dr. Baba Saheb Ambedkar tried to do is he tried to superimpose Marxist philosophy on Buddhism, and then tried to अच्छा implement. For example, ये जो दुख की concept है Buddhism में. So the हम्म concept of dukkha or suffering, Ambedkar interpreted that as a suffering resulting from class struggle, which is अच्छा not the case with actual Buddhism. Buddha did not talk about class struggle being a suffering. For him, sarvam हम्म dukkham was the case. हाँ Like all is suffering. हाँ everything is Yeah, suffering exactly. Because hamari Krishna craving is what creates suffering. So that was very हम्म metaphysical. That was very eschatological. Ambedkar reformed हम्म it to mean more, related to society, humanitarian values and stuff. हम्म Okay, Yeah. okay. So like what when we talk about like religion in general, right? कि जैसे Hinduism, Buddhism, Jainism, hmm so people usually say कि now they are totally different religions, but they are hmm just like different philosophies in one umbrella, right? That would be the right way to Yeah. say it, na? Like including Sikhism as well, because Sikhism Yeah. is also part of this Indian philosophical thought only, right? Definitely, yeah, definitely. Rather, if you many people think that Sikhism is a different religion, it is a blend of Hinduism and Hmm. Islam. That is partly Hmm. true. It is definitely a blend of Hinduism and Islam. क्योंकि उनके जो Hmm. भगत थे, भगत are Hmm. considered to be, basically they're saints. Hmm. Hmm. So even the bhagats, some of them were Muslims, but they were Sufi Hmm. Muslims. And Sufi Hmm. itself is a sect that is rejected in traditional Islamic theology. Ah, Yeah, exactly, because exactly. हाँ. Sufi metaphysics talks about Wahdat al-Wujud, which is not Hmm. never going to be accepted as an interpretation of oneness or Tawhid. Hmm. Wahdat al-Wujud Hmm. is closer to Advaita. Hmm. Hmm. So they were Sufi, but majority of the Bhagats of Sikhism Hmm. were Vaishnava Hmm. Bhakti poet saints. For example, Namdev. So Namdev was अच्छा. a Maharashtrian Bhakti poet saint. He was a Vaishnava. He has Hmm. written poetry on Vishnu. So he is one of the Bhagats of Sikhism. Okay, And okay, okay. yeah, and then even their gurus used to, some of them used to worship, for example, I guess, Guru Gobind Ji, I guess, he used to worship Hmm. Chandi, which is a अच्छा, अच्छा. goddess. Yeah, Durga, Hmm. a form of Durga. Hmm. Hmm. So Hmm. Sikhism is very much a Hindu thing. Sikhs are Hindus. Hmm. They are, you can say, Hmm. the warrior class of Hindus, warrior sect of Hmm. Hindus. इवन But yeah, मतलब आई थिंक कि फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं फॉर श्योर लाइक ट्रेडिशनल पुरानिक हिंदूज में जैनिज्म yeah, में एंड बुद्धिज्म में बट इफ yeah, यू सी फ्रॉम फार यू विल रियलाइज कि दे ऑल आर द लाइक अंडर वन अम्ब्रेला ओनली बिकॉज yeah, इनके अगर हम वो भी पढ़ेंगे ना जैसे इनकी मैं फिलोसफी की कभी पढ़ता हूँ तो आई सी की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी आपको
Yeah. जो हमारे क्या कहते हैं आस्तिक स्कूल्स हैं, और फिर बुद्धिज्म में भी, भले बुद्धिज्म में आस्तिक स्कूल नहीं है, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ Hmm. सिमिलैरिटीज इन बोथ ऑफ देम. Yeah, correct. Yeah. And even in Buddhist schools, they might not believe in the authority of Vedas, but they definitely believe in the authority of Buddhist texts. They consider those texts to be authoritative. Like the word of Buddha is considered to be the last thing. If you challenge the word of Buddha, you can no longer be a Buddhist as such. Or if अच्छा you अच्छा say अच्छा. propositions of Buddha are false, that discards you from being a Buddhist technically. अच्छा अच्छा, हाँ. Yeah. So इंटरेस्टिंग, yeah, हाँ. but the you can say the structure, the foundation, the plinth, not even the plinth, the foundation of all these things is these three concepts: samsara, dharma, and karma. Now, ओके. they were not present in all the Gnostic traditions. For example, if you consider Ajivika, so Ajivika did have the concept of karma, but they did not really have the concept of samsara and stuff. या फिर लोकायता, which is charvak. So even they did not believe in the concept of dharma or samsara. But चारवाक it तो is टोटली something, यूज्ड टू डिस्कार्ड yeah, दैट. yeah. So, and even Charvakas, if you, there are many conspiracy things about Charvaka as well. Well, you cannot call it conspiracy because there are academic texts on that. They say that Brahmins themselves created the Charvaka school, Lokayata, अच्छा to oppose whatever is there and then to show कि ये कितना, चुतियाप हो जाता है जब तुम वेद को oppose कर अच्छा देते हो. अच्छा अच्छा So अच्छा this is अच्छा. one theory. बिकॉज Yeah. हाँ, चारवाक के ऊपर बहुत सारे क्लेम्स इसलिए हैं क्योंकि वी डोंट हैव एनी लाइक फर्स्ट हैंड टेक्स्ट Yeah. ऑन चारवाक, राइट. जो भी है हमें Yeah. उनकी Correct. वाक्यों की इंटरप्रिटेशन से हमें चारवाक के बारे में जानने को मिलता है, बट हमारे पास कोई प्राइमरी टेक्स्ट नहीं है अबाउट चारवाक्स, राइट. Correct. Yeah, perfect. Yeah. So the only places where we have actual texts, like in the textual knowledge of Hinduism, it's coming from the Vedic tradition, and where Vedic tradition is opposing the other traditions of these Shramanic faiths. So yeah, but Buddhism के texts भी recitation से pass on हुए हैं. Jainism के there's not explicit method of recitation, but teachings are passed down the same way using an oral tradition. So, and Vedic tradition is like a very explicit, highly rigorous oral tradition. राइट राइट. सो लाइक Yeah, I think nowadays, like what we have is like it's not one system, it's caste system, right? जो अभी yeah, practice होता है usually. yeah. But now I think like it's like a very shady area because whenever you ask a believer, they कि नहीं नहीं भाई हमारे उसमें लिखा है तो that's why we go through this. And as soon as you talk about someone कि भाई इसकी problems है, and तभी वो मतलब कास्ट सिस्टम से हटके वन सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं, जैसे उन्हें डिफेंड करना होता है. दे स्टार्ट Yeah, डिफेंडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन सिस्टम, कह रहे नहीं नहीं कर्म के बात पे, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो कास्ट के बर्थ मतलब कास्ट के ऊपर कि भाई क्या कहते हैं जिसका कास्ट जैसा होगा वो अपने बच्चे को भी फिर वही कंटिन्यू करवाता है. डिफेंस में वो बोल yeah, देंगे कि नहीं नहीं वन सिस्टम के बेसिस पे हम मान रहे हैं कि जो कर्म के हिसाब से होता है तो ब्राह्मण बनता था. बट राइट नाउ इट्स अ रियलिटी दैट वी आर फॉलोइंग इट, एंड लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट. आई थिंक like there is no need for it right now, right? yeah, definitely. So caste system की rigidity तो definitely है ही, and that is a very it's good that we got rid of it. So yeah, that's definitely what I agree with. The thing here is, I think the reason why they defend indirectly the caste system is because the concept of jati is inherent in the concept of varnashrama. It's अच्छा implicit. अच्छा. जैसे मैंने अभी पहले बताया, जाति basically गुण कर्म संस्कार. So in तीनों पर dependent है. Now guna is not something that is acquired. Basically, it's not something that अच्छा. you develop over your life. It's inherent. It's innate. You are born with those gunas. How you act on it is the karma part, and अच्छा. what you have been introduced to, that is sanskar. सो गुण कर्म संस्कार अगर आप तीनों सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके आप वो वर्ण होल्ड कर सकते हो. एंड वर्ण बीइंग अच्छा. ontological categories is something that is defended even in पूर्व मीमांसा, लाइक जयंत भट्ट के आप अगर टेक्स्ट पढ़ोगे और उनके कमेंट्रीज, so they are definitely talking about varna as an ontological category. So अच्छा. basically there, so if you say कि lion lioness man woman, वैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ऐसा कुछ नहीं होता, because अच्छा Brahman is अच्छा. a neuter category. It's an ontological category. It's not something applied to people. You attain अच्छा अच्छा अच्छा. Brahmanhood. You're not born only a Brahmin. So अच्छा अच्छा. You being have born to as a Brahmin, follow some yeah, things. exactly. Being born as a Brahmin is one necessary condition, but it is not a sufficient condition. There are two other conditions that need to be true, Fulfilled. and that is karma and sanskara. Only then you can attain Brahminhood or Vaishyahood or Shudrahood, whatever.
But right During now that I time, don't think so, like yeah, nowadays not required. there is no need, हाँ Yeah, मतलब if आज you की want डेट to में तो read कोई भी about them, कुछ नहीं है yeah, हाँ if you read हाँ about if you want to read about the dialogue between Ambedkar and Mahatma Gandhi, if you actually read their हाँ dialogues, Mahatma Gandhi initially defended the concept of Varnashram because he यस believed यस हाँ that, yeah, Varnashram is essentially the thing that has kept the unity of India intact, and it is अच्छा अच्छा responsible for cultural evolution of India. That is what Gandhi believed in. And he अच्छा also अच्छा opposed intercaste marriages. But later his thoughts changed. And yeah, राइट 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 yeah, but those initial dialogues are very interesting. डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ अभी मैंने बुक्स तो Yeah, एक खैर लिखनी है सारी ठीक है yeah. मजा आएगा काफी ठीक है सो लाइक भार्गव लाइक मैं मतलब माय पॉइंट इज कि लाइक व्हाट्स योर पर्सनल बिलीव राइट नाउ लाइक वेयर यू स्टैंड राइट नाउ कि यू आर एन एग्नोस्टिक राइट नाउ और लाइक Yeah. यू स्टैंड ऑन द साइड ऑफ अ बिट लाइन यू नो थोड़ा सा टेल टू एथीज्म की साइड या थीज्म की साइड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट Oh, so I'm definitely an agnostic. The point is, ये जो दूसरे साइड के लोग हैं, atheism. So अच्छा the thing is, they pretend that they are atheist and because they are rational and stuff. So when they are अच्छा questioned अच्छा about the very same method that uses rationality, हम्म they start behaving very much like theists, where they अच्छा stick to their कि dogmatic belief. हाँ Yeah, and अच्छा they अच्छा don't want to agree to reason. और इंटरेस्टिंग थीस्ट का भी इंटरेस्टिंग सेम ही है, but the thing हाँ is, one of them already knows what rationality is, which is the atheistic side. The reason why they are atheists is because they are choosing rationality, but they are not choosing हम्म it till the end. वो बीच में ही रह हम्म गए हैं to satisfy their हम्म political, inclinations. अच्छा लाइक Sometimes व्हाट्स योर that is पॉइंट इज कि deliberate. हाँ कि जो लाइक एथिस्ट मतलब एक तो दो टाइप के एथिस्ट हैं जो एक जेन्युइनली एथिस्ट हैं जो जेन्युइनली Yeah, एक तो नहीं मानते फिलोसफिकल लेवल पे नहीं मानते एंड देन यू आर सेइंग कि yeah, देयर इज अ डिफरेंट सेक्ट जो पॉलिटिकल उसके लिए yeah. एथिस्ट है राइट Exactly. Yeah. इंटरेस्टिंग For example, if they go to, if you consider the United States, so United States में जो atheist होगा, he is atheistic particularly towards Christianity, and he'll criticize अच्छा Christianity the most because US में Christian nationalism हम्म ज़्यादा है. No one will हाँ come here हाँ and talk about, talk against Jainism, for example. And nobody gives a shit about Jainism in the US. वही वही So, but wahi, agar if you go to India, they will try to be atheists to oppose India's dominant religion, which is right now being dominant politically as well, which is Hinduism. अच्छा तो ये हमें सभी जगह दिखाई देता है. If you go to Iran, they are opposing Islam. अच्छा ईरान के केस में थोड़ा अलग है because it is authoritarian state. US and हाँ India are हाँ not हाँ authoritarian. Yeah, but yeah, they oppose Islam there. And I हम्म have met many professors in the US who are from Iran, and they are completely atheist. They hate Islam, and that's why they are atheistic because they also want to oppose the government over there, which is authoritarian. So like yeah, it's very like much. on Instagram also I have seen very few creators who criticize every religion like Yeah, extremism of every religion like yeah, you'll find people who acts like they are atheists but they are atheists towards you know towards a particular religion okay yeah, usually it is Hinduism but there are people who also you know particularly hate on particular religion like there are people who particularly hate on Islam there are people yeah, who particularly hate on Hinduism, right? But there are very few people who actually talks about the extremism on every other yeah, side. Be it yeah, you know Sikhism में जैसे वो खालिस्तानी मूवमेंट है या फिर there are yeah. people like एक बी रैशनल करके like I like his content also. तो ही इज लाइक कि वो सब पे ही चाहे कोई भी रिलीजन हो ठीक है दे उनका कोई भी एक्सट्रीमिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो दे अपोज तो बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसा करते हैं नहीं तो यूजुअली इट्स लाइक मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन Yeah, या yeah. Even in that case, अगर आप देखोगे, even in सब के channel जो है, they hardly criticize Buddhism, and there is हाँ also a political बुद्धिज्म reason इवन for that. वेस्ट में भी है ये लाइक यूजुअली आई सी Yeah, इन द वेस्ट कि पीपल वर्शिप बुद्धिज्म अ लॉट दे थिंक बिकॉज इट समहाउ इज डिफरेंट इज yeah, उसमें कोई इशू नहीं है इट इज पॉलिटिकली करेक्ट टू यू नो फॉलो बुद्धिज्म बट दे डोंट yeah. रियलाइज कि देयर आर प्रॉब्लम्स सिमिलर प्रॉब्लम्स इन बुद्धिज्म व्हेन यू एक्चुअली रीड द टेक्स्ट दैट्स व्हाई देयर आर Exactly. थ्री सेक्ट्स इन बुद्धिज्म ओनली Yeah, exactly. हाँ Like we have Theravada, Mahayana, Vajrayana. So even there वही are वही internal disagreements between these sects. Like if you go to Mahayana, if you go into Madhyamaka, so you have Sautantrika and Prasangika. So उनमें भी एक दूसरे के साथ dispute है. And then we have अच्छा Theravadi जिसमें भी dispute है. Pudgalawadi बीच में आ जाते हैं. So yeah, even Buddhism has refutations and defense of their propositions. और Buddhism में भी थोड़ा aspect है, which is proselytizing. And even professors in Buddhist studies themselves will see that.
कि बुद्धिज्म का भी हम्म थोड़ा प्रोसेलिटाइजिंग नेचर दिखता है हमें महायान बुद्धिज्म में हम्म स्पेशली। हम्म थेरवादी बहुत कम ही बचे हैं अभी, वैसे इंडिया में तो बहुत ही कम बचे हैं थेरवादी। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि लोगों को हिंदुज्म का कूलनेस चाहिए, तो उसमें वो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चाहिए, बट दे या हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, सो दे चूज बुद्धिज्म, जहाँ पे उन्हें वो सब भी एग्जैक्टली। मिल जाएगा, जहाँ पे मेडिटेशन मिल जाएगा, जहाँ पे कूलनेस मिल या जाएगी, बट दे डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बाय फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम एंड द मनुस्मृति वाला थिंग, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, उन्हें उससे बचने का है। तो दैट्स वाई या यूजुअली आप वेस्ट में देखोगे बुद्धिज्म को बहुत, आई पर्सनली थिंक कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, दीज ऑल आर जस्ट अंडर वन अम्ब्रेला। तुम या कितना भी कह लो कि दे आर डिफरेंट रिलीजन्स, नाउ या डेज यू कैन से कि जो अभी रिलीजन फॉलो हो रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट अर्लियर वाज। जैसे अभी जो या पौराणिक हिंदुइज्म है वो एक प्रॉपर रिलीजन ही रिलीजन है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक फिलोसॉफिकल थॉट है। पहले इट या यूज्ड टू बी अ फिलोसॉफिकल थॉट, बट राइट नाउ द या वे पीपल फॉलो इट, दे फॉलो इट लाइक एनी अदर रिलीजन, जस्ट लाइक या इस्लाम, जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी, दे गो ऑल इन। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड, मतलब दे डोंट वांट टू नो कि अदर साइड पे क्या क्वेश्चन है। जैसे फिलोसॉफिकली क्या होता है, वी डिस्कस, या वी डिबेट एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, चलो म्यूचुअली हम कहीं पहुंच गए। बट वेन यू टॉक अबाउट अ बिलीवर लाइक प्रॉपर रिलीजियस बिलीवर, दे डोंट वांट टू question the authority of that religion, that is, that या may be the text, that may be the god, or that may be anything related to that, right? या So right now करेक्ट। जैसे अभी हम प्रैक्टिस करें, that is proper religion, but अगर आप या जनरली आप ओरिजिन से देखोगे, then they are all under the same umbrella, am I right? Yeah, correct, perfect. Yeah. So, and even in if you consider Buddhism, how it's followed today in India, that is just one sect, which is not even a sect of Buddhism. It is Ambedkarite Buddhism. But if you go to China, for example, or if you go to Japan, udhar jo Buddhism follow hota hai, that is very much different. For example, Avatamsaka, if you talk about it, Avatamsaka takes a complete U-turn in one of its propositions about the self. So Buddhism अच्छा। initially is non-self. Buddha himself denied the concept of a permanent self. Whereas when you go हम्म to Avatamsaka, which is an evolution of Buddhism throughout, हम्म Avatamsaka talks about Tathagata Garbha, which is अच्छा। basically Buddha nature that is inherent in us, that is not the हम्म mind or the body, which is हम्म very similar to Atmana of the Upanishad. So, आत्मन, उन्होंने हाँ complete हाँ यूटिलाइज, हाँ yeah. So people might हाँ। question how exactly is this Buddhism. Plus, they have deities of that sort. For example, in Pure Land Buddhism, you have हम्म Bodhisattvas, which are almost अच्छा। deities. उनका एक पूरा अलग realm है, जैसे हमारा इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वैसा उनका एक हम्म। पूरा realm है Pure Land Buddhism का. अच्छा। For example, हम्म Avalokiteshvara lives in a different realm. And then many bodhisattvas and buddhas are there, जो almost हम्म deities ही है उनके, and they pray to them, हम्म they ask for things हम्म from them, they hope to go to that paradise after they die. This is very हम्म theistic in Buddhism, or हम्म that is very much इट, removed from what initially Buddhism was, Theravada. हाँ, and now it is very similar to like what earlier it was, right? Yeah, exactly, theistic religion. नाइस नाइस। भाई क्योंकि काफी ज्यादा लाइक आई यूज टू सी लाइक, जैसे अभी भी क्या होता है कि इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन तो अब ट्विटर बन चुका है जो पहले था, बट यूजुअली पीपल फाइट ऑन रिलीजन एंड अर्लियर मैंने ऐसे नहीं देखा था, बट राइट नाउ लाइक पीपल आल्सो लाइक कि बुद्धिज्म पहले था या ये पहले था, दे ऑल वर Yeah, सेम फ्रॉम फिलोसॉफिकल, उनका एक फिलोसॉफिकल रूट yeah, सेम ही था। नाउ यू कैन से कि yeah, बुद्धिज्म पहले था या हिंदुज्म पहले था, बट दे वर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ही सेक्ट। ठीक है, देवर आर मेनी मिसकंसेप्शन अबाउट द अशोका एज वेल रिगार्डिंग दिस ओनली, yeah, जब हम बात yeah, करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। yeah. बट व्हेन यू रीड द पर्टिकुलर टेक्स्ट यू रियलाइज कि कितना उसमें से सच है and कितना उसमें फैड है सारा। Exactly, राइट। yeah. If you want to read हाँ about Buddhism and Jainism, for example, Buddhism हाँ especially, because that's the हाँ। second dominant religion after Hinduism यप in the world as यप। well. So, one of the books is Introduction to Buddhism by Peter Harvey. Peter ओके। Harvey is another reputed scholar, and that's published again by Cambridge University Press. ठीक And है। Peter Harvey is initiated into Sangha, so he's a part of Sangha. So he's ओके somewhat ओके। of a practitioner as well. नाइस So नाइस। yeah, he has written, and he's also a scholar. And then you can read the works of Richard Gombrich. Gombrich अच्छा। is considered to be like the badass guy in Buddhism, because there's an हाँ entire terminology coming after Gombrich called Gombrichian terminology. है। So yeah, exactly. So he's at that level right now. Um, अच्छा अच्छा नाइस। yeah, so you can also read the academic texts of Richard Gombrich. He's the closest that we have to interpreting actually what Buddhism is, you know, हम्म based on facts, not just based on belief. हम्म हम्म। So yeah, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। and once you read that, people will find out that okay, Buddhism is not
what is being portrayed. जो पूरा political हम्म narrative है इंडिया में कि Hinduism bad, हम्म Buddhism good. So हम्म वो सब gray area में चला जाता है. लाइक मैं तो मतलब जब भी ऐसी कोई बात होती है आई यूजुअली जस्ट से कि भाई एक ही है, मतलब तुम कितना भी डिनाई कर लो, Yeah, दे आर yeah, फ्रॉम द सेम फिलोसॉफिकल रूट। तुम आज इन्हें exactly. रिलीजन के टर्म में डाल सकते हो एंड यस यू कैन से कि आज रिलीजन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जो आज फॉलो हो रहा है दैट इज प्रॉपर रिलीजन वाला चीज Yeah, की। हिंदुइज्म में भी आप ये नहीं बोल सकते कि वी आर नॉट अ रिलीजन, वी आर अ फिलोसॉफिकल बिलीव, वी yeah. यूज टू बी अ फिलोसॉफिकल बिलीव बट राइट नाउ वी Yeah, आर रिलीजन ओनली। जैसे हम definitely. प्रैक्टिस Yeah, करते हैं Quranic वो Hinduism रिलीजन is की religion. डेफिनेशन। हाँ, Yeah, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अरे नहीं नहीं वी आर फिलोसॉफिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ लाइफ, यू यूज टू टॉक mhm. अबाउट वे ऑफ लाइफ बट राइट नाउ इट्स Yeah, प्रॉपर रिलीजन। ठीक है, yeah, एंड सिमिलरली exactly. बुद्धिज्म, जैनिज्म, हाँ, दे ऑल वर स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर श्योर, schools of Yeah, philosophy, but right now the way people follow it they like treat it as a proper क्या बोलेंगे अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि हम बहुत ज्यादा yeah, इन्फ्लुएंस है ना उससे, क्योंकि वी हमने उनसे इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वी स्टार्टेड डिफेंडिंग एवरीथिंग, एक मेकिंग फेंस अराउंड रिलीजन, द आइडियाज, देन exactly. क्रिएटिंग Mhm. दिस आइडियोलॉजीज। तो वो अब Yeah. वही है। And even arguments, like for example, even the people who हाँ are philosophically atheist, the हम्म argument that they give to claim God does not exist, they basically हम्म cite either the problem of evil or omnipotence paradox or Nelson Pike's हम्म argument against omniscience. हम्म All these हम्म arguments specifically apply to the Abrahamic God because ये attributes पे applicable है. Omnipotence, omniscience, and हम्म benevolence. So हम्म in Indian traditions or even in Eastern traditions, God is not necessarily हम्म defined like that. So if your अच्छा criticism अच्छा is entirely aimed at हम्म a particular model, तो हाँ वो मॉडल हम्म फॉल्सिफाई हो जाएगा हिंदुइज्म में भी. फॉर एग्जाम्पल हम्म ईश्वर, हु इज नोन टू हैव दी हम्म सर्टन क्वालिटीज, बट पीछे राइट जो राइट उसकी एस्केटोलॉजी है, that will not be challenged because that eschatology is different in Abrahamic religions. हम्म So that critique हम्म won't apply here. और वो फॉर्मलिज्म में भी हम्म दिखाई देगा once you start अच्छा तो लाइक interpreting stuff formally. कैन यू डिस्टिंग्विश कि कैसे यूजुअली वेस्ट में या फिर अब्राहमिक रिलीजन में गॉड को क्लासिफाई किया जाता है एंड कैसे ईस्ट में डिफरेंट है? जैसे ईस्ट में वेस्ट वाला भी होगा फॉर श्योर, जैसे एक Yeah, हमारे पास वो है जिसमें हम मानते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है, उसके yeah. एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उनकी लीला होती है वगैरह वगैरह, बट देर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट, कैन यू लाइक एक्सप्लेन दैट? Yeah, definitely. So in Abrahamic religions, it begins with Judaism. So Judaism is the हम्म parent religion of Abrahamic religions. हम्म हम्म Christianity is a reform of Judaism, and Islam is a reform of हम्म Christianity and Judaism. अच्छा So Judaism में जो 5 scriptures है, TNK, Tanakh. हम्म So हम्म उनके कुछ नाम भी है, but TNK is the short form. So ओके they are basically talking about God, which is very much in a poetic manner, and they are अच्छा talking अच्छा about God, which is the creator of the universe. And Genesis में हम्म basically जो लिखा है 6 दिन में बनाई वगैरह, that is actually a part of whole story. They don't literally believe. Some of them are biblical literalists, but they basically हम्म believe that there is a creator who is all powerful, all knowing, and benevolent, and he is the हम्म cause, the first cause of all the universe. So that is what हम्म Judaism believes. और Judaism का एक बहुत ही अच्छा school of thought है, which is Kabbalah. Kabbalistic Judaism में they talk about हम्म Sephiroths. So अच्छा Sephiroths are basically 10 spheres of existence, which are nothing but qualities of God. और अच्छा initially वो अच्छा कहते हैं कि जब creation हुआ था, so these हम्म 10 spheres were intact. हम्म They were हम्म separated from each other, but they were intact. They were not हम्म broken. हम्म Then something happened, and the spheres broke, and that is how evil entered into the world, and that is how all these spheres got mixed and led to creation. So these ओके 10 ओके spheres are basically qualities of God, and that is how God created the universe. So it may not अच्छा be अच्छा conscious, but it's still the cause of the universe. So that हम्म is what Kabbalistic Judaism talks about with the concept of Sephiroth. बाद में, हम्म when you get to Christianity में Jesus is considered to be the God. Many people think that he's the son of God, but उसमें भी हम्म son की जो concept है, that is a part of the Trinity. हम्म So हम्म in Christianity, Jesus is God. He's 100% human and 100% God. And then in हम्म Christian theology, basically Catholicism, there is a division, dichotomy. So that is called अच्छा homoousianism and homoousianism. हम्म इसमें difference ये है कि हम्म first category believes that Jesus is co-equal and co-eternal with God. So God and Jesus अच्छा are अच्छा made of the same substance. सिर्फ हम्म एक उसका one मतलब of it is पार्ट है जो, manifested. हाँ Yeah, physical हम्म manifestation of God is Jesus.
So if you ठीक है want to ठीक है see how God looks, that is what you have to जीसस do. Exactly. So that is one school of thought. The other school of thought is Jesus is not co-equal, but it is ousia, which means Jesus is made of the same substance that God is made of. But Jesus is a created being, which means God comes first, God the Father comes first, and Jesus is the then first created being. Yeah. hmm, And that is how they defend the passage in John 1 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So hmm, notice like a genius thing that they have done here. In the beginning was the Word, hmm, Logos. hmm, The Hebrew hmm, name is Logos. The Greek name is hmm. Logos. Logos Logos is, yeah, word or logic. So in the beginning hmm, was the Word, and the Word was with hmm, God, and the Word was God. And hmm, he was there in the beginning. So now this he they're talking hmm, about is Jesus. All things were made through it's him. Yeah. hmm, So he's the first created being. So this is Christianity. Christianity hmm, also believes in all powerful, all knowing, and benevolent God, which is hmm. God the Father. And Similar Jesus to is a manifestation of that. hmm. Basically, you can say Jesus is avatar, which is more like हाँ the correct thing. हाँ Yeah. And yeah yeah. And in Islam, हाँ Jesus is not the Son of God, nor is he God hmm, himself. He's a prophet, a very hmm, important prophet, but a hmm. prophet, not the Son of God, अच्छा nor अच्छा the God hmm, himself. Islam is hmm, strict monotheism, which means there is only one God. He has no parent, no sibling, no wife, no sons or daughters, hmm, and he's hmm. formless and shapeless. Shapeless hmm, hmm, Yeah, and idolatry and iconolatry nahi kar sakte Allah ki. hmm, So hmm, yeah, and they are talk about Taweed, which is oneness. And hmm, then the attribute of God is there are 99 names of Allah, which talks about attributes of God. hmm, So yeah, even there God is all powerful, all knowing, benevolent. So ये जो मॉडल है hmm, कंसिस्टेंटली वो तीनों रिलीजन्स hmm, एब्राहमिक में दिखाई देता है ऑल पावरफुल ऑल नोइंग बेनेवलेंट. hmm, इसको अगर hmm, तुम क्रिटिक करोगे एंड इफ यू शो अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दीज एट्रीब्यूट्स hmm, then you hmm. have disproved the concept of Abrahamic God. Okay So okay that is okay what all the hmm. arguments are, targeting. हाँ This model, and this is ठीक है also ठीक called है Saint, yeah, Anson's God. This, however, is not the case in Indian religions. Now, some Indian अच्छा gods are definitely all powerful, all knowing, benevolent, hmm, but that's not exclusively the hmm, concept, because hmm, Hinduism talks about a different idea called Brahma, which is hmm, mentioned in the Upanishads as well. So Brahma is not hmm. attribute, a god that has हाँ attributes. Yeah, Brahma is वही वही Niraguna. The word itself says it. So it is not Saguna. कोई गुण नहीं है कोई हाँ Exactly. So how do you describe Brahma? What is Brahma? If you ask an Upanishadic poet, what is Brahma? हम्म They would say Neti Neti. Brahma is ना ये not ना वो this, not that. हम्म Exactly, yeah. हम्म So हम्म there are two definitions. One is called apophatic and cataphatic. हम्म Cataphatic definitions are positive definitions. For example, what is density? हम्म Mass upon volume. But if हम्म so, there is something that you can, define it by. से yep Yeah. Apophatic definitions are negative definitions. So, for example, if you ask them, what is dharma? So the person would say, well, हम्म dharma is not this, not this, not this, not this. Whatever remains is dharma. धर्म So the definition is by negating the things. So that is the same thing as Brahma or neti neti, हम्म not this, not that. हम्म हम्म And in other expositions, like when you go to Vedanta, you have हम्म Vishishtadvaita, Dvaita, and Advaita. So there are three हम्म interpretations which offer different propositions about the same deity. So हम्म Advaita says that Brahma and Atman are exactly equal, and this is all हम्म illusion, illusory. हम्म हम्म Whereas Dvaita says no, you cannot never be equal to the divine. Divine is always different. And हम्म Vishishtadvaita is qualified non-difference. But the thing is, if you oppose God as all-powerful, all-knowing, benevolent, it only defeats हम्म Dvaita, for example. It does not defeat Advaita and Vishishtadvaita. It does not defeat the अच्छा Upanishadic concept of Brahma. It does not निर्गुण defeat the ब्रह्म concept, हाँ yeah, and it does हाँ not defeat the हाँ concept of for example, Rab in Sikhism. It does not defeat the concept of Taoism, which talks about Tao हम्म as the nature, um, you know, हम्म way of nature. हम्म That is Tao, way of life. हम्म हम्म So it does not defeat that हम्म as well. So yeah, this So, like, is there criticism. any good argument, opposing this God, like the Nirgun Brahman? Like, is there any good argument No, opposing, or अभी तक नहीं है yeah. ऐसा कुछ? So Nirgun, हाँ, Brahma. So for example, Dvaita, Vishishtadvaita, and Advaita, they had arguments against each other, but they were अच्छा, basically trying to negate each other's ontology, which is the nature of God. So they did अच्छा, अच्छा, not try to prove that God does not exist.
उसके They were नेचर के बारे में simply बात हो रही है। exactly, yeah. So they were simply trying to refute each other's propositions about nature. Ontology refute हो रही थी, metaphysical existence हम्म नहीं refute हो रहा था. Yeah. हम्म So to prove that Brahma does not exist, someone would have to come up with an हम्म argument. Argument that हम्म logically proves, step by step, हम्म which बट entails the इट्स वेरी हार्ड conclusion ना from बिकॉज Brahma. Yeah, हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मतलब हमारे exactly. पास डेफिनेशन ही नहीं है, सो इट्स वेरी हार्ड टू निगेट दैट डेफिनेशन। Yeah. Even if you read in Christianity, it's very hard to refute that, even using the problem of evil. Because if you read SCP's page, Stanford Encyclopedia of हम्म Philosophy, उस पर एक पूरी एंट्री हम्म है प्रॉब्लम ऑफ इविल, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, हम्म डायरेक्ट डिडक्टिव, डायरेक्ट इंडक्टिव, इनडायरेक्ट इंडक्टिव, and there are multiple arguments, probabilistic arguments, logical arguments. Even then there are मोस्टली इसे sandarbh. फ्री विल के अंदर डाल देते हैं ना, मतलब मोस्टली लोग जो Yeah, फ्री विल के आर्गुमेंट आ जाते हैं यहाँ पे कि बिकॉज फ्री विल एग्जिस्ट तो यू हैव yeah, बोथ द चॉइसेस कि आइदर यू कैन डू yeah, दिस एंड यू कैन डू दैट, सो इन द एंड यू आर टेकिंग अ डिसीजन बट बोथ विल एग्जिस्ट correct. रिगार्डलेस गॉड है या नहीं है। Correct, yeah. So that's why they talk about this is called theodicy. So when you have tried to अच्छा। justify or explain why there is हम्म evil in the world and that is हम्म compatible with God's existence, what you have established is called a हम्म theodicy. So there हम्म is free will theodicy, soul making theodicy, और थॉमस एक्वाइनस का अगर आप काम पढ़ोगे तो वो पूरा इस हम्म पर ही है. And अच्छा। Aquinas, yeah, also talked about the concept of DDS, which is the doctrine of divine simplicity, which is very close to the हम्म Advaitic interpretation. So, हम्म yeah, basically, God is omniscient. This is a false statement as per Aquinas. He says that God is omniscience. Omniscience अच्छा। is not an attribute of God. God is whatever हाँ He वो is. इज हाँ Yeah, हाँ, समझ गया that are समझ His गया। attributes. Yeah, इंटरेस्टिंग। yeah, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो लाइक भार्गव, लाइक लेट तो नहीं हो रहा ना? इट्स लाइक वन, ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटा खींच दिया है, ठीक yeah. है। No, I mean लाइक that's fine. Even. हाँ, टाइम इशू तो नहीं है ना? मैं बस वही कहना कहा था। हाँ, तो लाइक यूजुअली वैसे मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। लाइक इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव टू सजेस्ट टू मॉडर्न डे लाइक स्टूडेंट्स बोल लो, या फिर जो थोड़ा फिलोसफी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो जानना चाहते हैं, तो लाइक यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम कि what you don't have to do, like you don't have to follow creators blindly, you have to do own research, you have to start reading, right? So like any advice on that note? Yeah, definitely. So अगर आपको philosophy पढ़ना है आज के 20th century में, so 20th हाँ। century philosophy is heavily dominated by analytic philosophy. Continental भी है, हम्म but analytic heavily dominate करता है अभी भी. So you should हम्म start learning logic first, formal logic, classical logic, हम्म हम्म which is हम्म propositional, first order, and modal logic. इसमें से भी हम्म मॉडल लॉजिक नहीं सीखा तो भी चलेगा अभी के लिए, जो क्रिप्की वगैरह बहुत दूर है. अच्छा। इवन इफ यू लर्न हम्म प्रॉप लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स, और उस पर बहुत काम हुआ हम्म है. एंड दैट इज क्लासिकल लॉजिक. ये तीनों पढ़ने के हम्म बाद नॉन क्लासिकल में भी जा सकते हो, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. But the first हम्म thing that I think every person should start doing is they genuinely want to learn philosophy, not just literature, which is what Continental goes closer to. राइट राइट। If you want to learn, yeah, analyze things. If you want to apply them in science, philosophy of linguistics, philosophy of biology and हम्म physics, experiments, epistemology, ethics, सब कुछ, learn logic first. So I would recommend, हम्म for example, Introduction to Formal Logic by P.D. Magnus, which is a textbook here. हम्म Like it's a textbook अच्छा in अच्छा। the undergraduate course on philosophy. So ओह yeah, नाइस नाइस। and that's the strongest recommendation. और लाइक एनी पर्टिकुलर फिलोसोफर जो वेस्ट में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, एंड इंडिया में भी एज वेल, इंडियन फिलोसफी में भी ऐसा कोई हो तो? So the thing is, I'm more inspired by analytic philosophy. So I was initially very much inspired by Frege and Russell and Wittgenstein, especially Wittgenstein because हम्म वो खुद aeronautical हम्म engineer थे और बाद में philosopher हुए. अच्छा। So that's हाँ। very much relatable for me. And he's like the नाइस most नाइस। famous philosopher in 20th century in analytic tradition. श्योर श्योर Yeah. फॉर श्योर। एंड इंडियन फिलोसफी में? Yeah, in Indian philosophy, so Indian philosophy में ऐसे individualistic नहीं मिलेंगे आपको. For example, if you read हम्म Upanishads, उपनिषद्स हम्म में जो कंपोज हुआ है, फॉर एग्जांपल बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि बात करते हैं, देन वी हैव गौतम, देन वी हैव अत्रि. सो इन सबके हम्म डायलॉग्स एक साथ दिए हैं. बट देन वी हैव लाइक वो प्रॉपर अष्टावक्र एक गीता. स्कूल है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, या like we have Ashtavakra हाँ Gita. So Ashtavakra is himself हाँ। a philosopher, and that text is very beautiful.
So that is what inspired me. Hmm. इसलिए I started sharing Upanishad Hmm. Ganga episodes of Ashtavakra Gita. Hmm. So yeah, Right, right, in Indian tradition, you can be inspired by texts or propositions. right, right. In Western Not particular traditions, you can philosophers. Hmm. correct, yeah. Hmm. In Western tradition, you can be inspired by individuals. In here, you can be inspired Hmm. by traditions. Got it. Interesting. So Bhargav, it Yeah, was very interesting talking to you. To be honest, मैं yeah, मतलब मेरे को तो लगा ही नहीं कि हम मतलब पॉडकास्ट ले कर रहे हैं. मैं तो पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने सारे जो भी मेरे को definitely. इंटरेस्ट था. ठीक है. एंड हाँ, विल डू इट डेफिनेटली अगेन. ठीक है. कुछ टाइम में Okay, दोबारा करते हैं. ठीक है. डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. एंड इट वाज yeah, ग्रेट हैविंग यू हियर. ठीक है. ऑल द रिकमेंडेशन मैंने सब लिख लिए एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिन्हें भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. आई पिन द भार्गव इंस्टाग्राम आईडी एज वेल. यू कैन चेक दैट आउट. ठीक है. अमेजिंग कंटेंट. एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम. ओके. yes, definitely. तो मैं एंड स्ट्रीम कर रहा हूँ.